So, namaskar, all of you. So, we will be starting with our class for Odisha Judicial Service Prelims. तो basic जिनस मु किछिटा कहिबी ए क्लास रिलेटेड जोटा कि हमें पूरा कोर्स रे में ताको मेंटेन करिवा ऑब्जर्व करिवा प्रथमटा हला कि जहाँ भी हमें पढ़िबा तार स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपन को ग्रुप रे आगुरु शेयर कराई जे जेमति कि एबे प्रथम स्टैट्यूट जोटा ए 3 दिन पे हमें पढ़िबा सेटा हला कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो जेति कि आपन को प्रिपेयर करिवार अछि ओजेएस प्रीलिम्स पई सेही पीडीएफ टा जोटा मु देइछि सेटा सफिशिएंट हबो ओके एटा काहे कि ना आपन को लेखिया पई एमति न पड़े काहे कि ना हमें एटी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रे मैक्सिमम टाइम हमें दबा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रे काना जेते बेले आपण सब ऑप्शन को डिस्कस करचंती ता जोरु भी आउ केते क्वेश्चंस पढ़ी परिबो ताकू भी आपण डिस्कस करछे ओके सो दैट पार्ट विल बी देयर सो आउ आपण को ऐप रे जो गोटे HYT फोल्डर अछि हाई यील्डिंग टॉपिक्स से हाई यील्डिंग टॉपिक्स उडा को देखिबे प्रीलिम्स पई सेही टॉपिक्स उडा ही दरकार ओके आपणकर 460 ऊपर आर्टिकल्स हेलानी कॉन्स्टिट्यूशन रे से सब गुड़ा आपन को पढ़िया दरकार नहीं ता भीतर जोटा पढुची जुडिशियल सर्विस पई जोटा इंपोर्टेंट आपन को सेटा ही दरकार अछि ओके सो हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन रो जो पार्ट रू स्टार्ट करिबा फंडामेंटली तीनटा इंपोर्टेंट पार्ट्स हमें आज पढ़िबा पार्ट्स इन द सेंस दैट तीनटा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हमें आज पढ़िबा प्रथमे जहां ऊपर क्वेश्चंस पड़े ओके प्रथमत हैला कि कॉन्स्टिट्यूशन रो सेलिएंट फीचर्स कौन सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन आउ प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए तीनटा रु विगत वर्ष रे क्वेश्चंस पड़ीची ओजेएस रे जेतेबेले हमें गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट सारी दबा सेतेबेले मु आपन को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ओडा भी डिस्कस करेबे त माने हमें जेतेबेले फर्स्ट ऑलरेडी सेटा पीडीएफ रे शेड्यूल रे मु दे देछि कि थियोरी रो दीटा राउंड हमें कंप्लीट करिबा थरे सारिबा पुनी ऑथर रिवीजन माने वंस वी कंप्लीट सेकंड टाइम वी रिवाइज ठीक सेमती थ्रू द टेस्ट सीरीज देयर आर 30 टेस्ट 10 टा सेट्स को नै कि तीनटा सेट्स रे आपे आपण ताको तीन थरो रिवाइज करिवे प्रथम 10 टा सेट आपणकर पर्टिकुलर पेपर्स ऊपर जेमति कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 100 टा क्वेश्चन हैला गोटे टेस्ट हैला ओके कॉन्स्टिट्यूशन गोटे टेस्ट हैला ठीक सेमती तारो राउंड 2 अछि आउ थर्ड राउंड रो जो 10 टा टेस्ट हबो से गोडा वीएसटीज माने एग्जैक्ट सब पूरा फुल सिलेबस टेस्ट आपण आसी ओके एनी डाउट्स दैट यू फेस यू कैन आस्क मी एटी जदी पचारि पारनांती काना एटा टिके ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी रहइबो गुडे जिंस कवर करिवार अछि तरो मु ताको से हिसाब रे पढेबी आउ डाउट आपनकर जेते भी बाहरला ओके जो नंबर दिया होची स्क्रॉल रे सेही नंबर रे आपन डाउट्स पचारि परिबे 7684054656 just drop in your doubts मु बुझी पारलेनी सो मु वॉइस नोट रे सेटा क्लियर कर दे ओके so now let us start देखो फर्स्ट चैप्टर आसिला जोटा ओके दिस इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लीव दिस चैप्टर एई चैप्टर ता ओडिशा जुडिशियल सर्विस पई एते इंपोर्टेंट नुह किंतु आ ऊपर थरे क्वेश्चन पड़ीची only 2 points in this chapter you have to remember either you remember कहना एटा तो मु हाईलाइट करे भी दोची ऑलरेडी मु क्लास पर हाईलाइटेड एटा भी दे देबी अदरवाइज अपन लिखि देबे भी इट्स फाइन बट व्हाई बिकॉज़ इट इज रिलेटेड टू जुडिशियरी संगे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट संगे रिलेटेड जो क्लॉज किबा जो पॉइंट्स उडा अछि सेति के दरकार तो फर्स्ट पॉइंट जोटा मते एतरे जानिबार अछि सेटा हला कि फर्स्ट टाइम पाई सुप्रीम कोर्ट इंडिया रे कोठी एस्टैब्लिश हेतिला कलकत्ता रे हेतिला 1774 को एक्ट हिसाब रे हेतिला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हला इट प्रोवाइडेड इट माने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 provided for the establishment of a supreme court at Calcutta which was established in 1774 the composition कौन थिला with original and appellate jurisdiction comprising one chief justice and 3 other judges चार जन थिले one chief justice and 3 other judges हला एटा मन रखियार अछि regulating act of 1773 supreme court at Calcutta ओके तापर अपन देखिसे बहुत रे मेंस पई कि अपन पढुथिबे टेक्स्ट बुक
साइटेशंस रे देखि गोटे एफसी लिखा है एफसी स्टैंड्स फॉर फेडरल कोर्ट तेणु इंडिया रे जो फेडरल कोर्ट टा एस्टैब्लिश हैला ओके सो फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937 under which act government of India act okay 1935 which is called the mother source of Indian constitution कहीं की कुआ जाए को मदर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं की ना करंट कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑलमोस्ट 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो डिराइव कराई ओके सो रिमेंबर तार आउ जो प्रोविजन सुना दी ना यू कैन स्किप इट सी कोनोसी परीक्षा आपण जतले दउचंती देयर इज ए 40 or 20 40 40 formula okay 20 40 40 कोन 20 very easy questions जीएनएस से कर दबो 40 हैला एग्जाम लेवल क्वेश्चन जे प्रिपेयर करथियो से करबो आउ 40 पाक बाकी आपनकर टिके डिफिकल्ट आसे ओके और सेटा एग्जाम टू एग्जाम डिफर करे ठीक अछि जोटा कि टिके एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन दरकार मोर एम कोन 20 इजी प्लस 40 एग्जाम लेवल क्वेश्चन 60 टा क्वेश्चंस भितरु मते यदि 45 टा की 50 टा भी ठीक होची ताले मु मेंस लिखिबी ओके सो एई चैप्टर रे केवल एई दीटा आउ किछि करिवार नै मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा छाडी देबे गोटे जिंस खाली गोटिए पॉइंट कोन रखिबे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपनकर थिला इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड ठीक अछि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थिला से ब्रिटिश प्रोविंसेस रे डायरेक्ट इलेक्शन से थिला और जो प्रिंसली स्टेट्स थिले से माने सब नॉमिनेट करिकि पठेइथिले एतिकी मन रखनु त डिटेल्स रे जिबा दरकार नै Constituent Assembly कौन थिला what was the composition of Constituent Assembly it was a completely elected house okay it was completely nominated partly elected and partly nominated none of the above so partly elected and partly nominated ठीक है इतनी मन रखरे ये टोटल चैप्टर छाड़ देबे ओके इतरे पढ़िबार चांसेस नाउ वी कम टू द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ओके जोटा आज हमर पढ़िबार अछि फर्स्ट हला salient features of the constitution number 1 second हला sources of the constitution ता ऊपर 3-4 थर ओजेएस रे क्वेश्चन पढि सच्ची that is number 2 and third हला आपनकर preamble to the constitution हमें फर्स्ट थ्योरी टा सारिबा तापर each chapters ऊपर हमें क्वेश्चंस करिका करिबा 10 टा क्वेश्चन ओके राति पई आज प्लानिंग हैला फंडामेंटल राइट्स पूरा एंटायर सेशन ता केवल फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी ओके आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दैट इज पार्ट 3 10 टा क्वेश्चन ईच आर्टिकल रो ठीक अछि 10 टा क्वेश्चन ईच आर्टिकल रो ऑलरेडी आपन ऐप रे अपलोड हे जाई तो क्लास पर जो टाइम टा मिलबो आपन सेटा भी टिके रिवाइज कर दे पारी okay so let us come to salient features of Indian constitution see Indian constitution को कहा जाए a bag of borrowings okay or a patchwork constitution okay कौन पई ना हमें बहुत गुडे constitutions रो okay ताको एनालिसिस करी की हमर constituent assembly हम constitution ता बनेतला ड्राफ्टिंग कमिटी जे थिले जे डांगो ड्राफ्ट करिया थिला okay गोटे से मन रखिबे constitution रो okay जो प्रीएम्बल टा परे पढिबा सेटा सभा शेष रे हेतिला किंतु प्रथम रे अछि ओके इट वाज बेसिकली रिटन एट लास्ट बट इट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट ठीक है एनीवे सो बहुत गुडे कॉन्स्टिट्यूशंस रो भलो पॉइंट्स निया हला ताकू क्लब करी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ता बनै बट द मदर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 70% of the constitution through judge which barle so now let us come lengthiest written constitution deso level re at the national level this is the lengthiest written constitution original constitution jota proper heitila okay sethare preamble thila 395 articles thila jeta sei time re 22 ta part au 8 ta schedule re divide heitila okay kintu jodi question padla apos am OJS se padhar chance nahi which is the lengthiest constitution of the world ताले यूएस तो गोटे स्टेट अछि अलाबामा तार कॉन्स्टिट्यूशन ता हम कॉन्स्टिट्यूशन टू भी बड़ किंतु सेटा गोटे नेशन रो कॉन्स्टिट्यूशन नो सेटा गोटे स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशन इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स रो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ताको देश रो जो कॉन्स्टिट्यूशन ता
सबुठु वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तार बहुत कारण अछि जोटा कि मे बी आगु जे कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस नेथिबो ऑप्शनल ताकू पढे पड़े ओके सो नंबर 1 लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पॉइंट एथरा आसिला कोन drawn from various sources always remember that our constitution has been drawn from various other constitutions जोटा कि हमें पढ़िबा को फीचर टा को कॉन्स्टिट्यूशन रो आछि ओके but we have not copy pasted it blindly amaro जोठी दरकार सेठी हमें चेंज करी यू टेक फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटा आपण आनले कोठू यूके रु ओके यूनाइटेड किंगडम रु अच्छा यूनाइटेड किंगडम रो तांको पार्लियामेंट्री सिस्टम केमतिया ओके तांकर सिटी एटा कोन दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन अछि हेड ऑफ द स्टेट इज ए मोनार्क आमे किंतु हेलु रिपब्लिक हमर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड डिफरेंस देखंतु जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से माने फॉलो करंदी देयर द प्राइम मिनिस्टर ओनली कैन बी फ्रॉम द लोअर हाउस ओके तांकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स रु प्राइम मिनिस्टर हे परिबेनी प्राइम मिनिस्टर जे हेबे से हाउस ऑफ कॉमन्स रु हेबे लोअर हाउस रु हमर सेमति किछि बार नै आमे सेटा चेंज करलु ओके काहे कि आमे काहे कि चेंज करलु ना हमर अपर हाउस रे भी कॉमन लोक होई जाउछन ऑल्दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही जाउछन किंतु से माने एमति के यू नो गोटे राजा की गोटे लॉर्ड टाइप रो हाउस ऑफ लॉर्ड्स टाइप रो सेमिति तो किंग तंकु की क्वीन तंकु रखि दउना ओके नॉमिनेटेड मेंबर्स थांती बट दैट इज फॉर वेरियस अचीवमेंट्स तेणु आमे कोन चेंज कलु सेम कॉन्टेक्स्ट रे हमर प्राइम मिनिस्टर जो भी हाउस रो होई परिबो ठीक अछि प्रायतः लोकसभा रु थांती किंतु मनमोहन सिंह थिले इंदिरा कुमार गुजराल थिले एचडी देवेगौड़ा थिले से माने राज्यसभा रु थिले ओके सो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू रु भी कहूची एमिति आपण एलेज कर परिबेनी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पैच वर्क निजरो किछि इंजिनियरिटी नाही आपण खाली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो आनी कि पैच करके बने देले ना सेटा नो ओके तापरे नेक्स्ट पॉइंट 3 की आसंतु ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओके ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो एथरे कोन अछि ना बेसिकली rigidity or flexibility माने some parts of the constitution it is very difficult to amend special majority दरकार suppose एमिति किछि आपण अमेंड करिया पे चाहउचंदी with affects the center state relationship ताले पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस concurrence of at least half of the state legislatures आपण को दरकार ठीक अछि very difficult जेमति कि जीएसटी बिल रहेला ओके किंबा you know many other bills have been passed जोटा कि center of state रो power equation ता change करू okay so keep that in mind आउ केते जिंस ओडा क्वाइट फ्लेक्सिबल इजीली अपन अमेंड कर देबे जंत कि सैलरी बॉडी व प्रेसिडेंट करो सैलरी बॉडी व एमपीस करो आराम रे गोटे सिंपल मेजॉरिटी रे सेटा करि हिजु okay so it is a blend of flexibility means many parts can easily be amended and rigidity some important parts it requires a lot of consensus to be amended okay bola point 4% tapare next federal system with unitary bias so it is a federal system the subjects are divided between center and state and there are some common subjects which is there in the concurrent list so 3 lists are there the union list the state list and the concurrent list okay so that power divide kara hichi state ro power है law and order agriculture state सेटा तारा देखियो defense space सेथरे आपनकर okay defense foreign affairs एगुडा सब आपनकर सेंटर पाखरे रहला आ किछिटा जिंस okay जोटा कि कॉमनली तांकर दी जन जाक लॉ बनै पारि राइट बट विथ अ यूनिटरी बायस यूनिटरी माने कोन वन यूनिट माने वन तो सेंटर पाखरे पावर टा अछि बेसी पावर बायस टा ता आ से बायस टा केते बळे बेसी देखा जाय ड्यूरिंग इमरजेंसी जेतले हबो पावर गुडा प्राय पळेबो सेंटर पाखु सेतपै को जाउची फेडरल सिस्टम दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स अछि बट यूनिटरी बायस सेंटर इज पावरफुल मोर पावरफुल ओके so eta hala point number 4 now come to point number 5 parliamentary form of government जोडा मु कहली वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हम यूके टू आनसिलु ओके तमरे कोन हमर प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम
आपण जदि कहबे काली कोनोसी गोटे पार्टी 3/4 मेजोरिटी 75% मेजोरिटी नहीं कि पार्लियामेंट रे पळा आसला लोकसभा राज्यसभा और सी कहले आम अमेरिका भाया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करू सेटा हेई परिबो कहीं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड ओके एज ए बेसिक स्ट्रक्चर जोटा कि हमर केशवानंद भारती ओके केस पर आम देखिलु सेटा गोटे बेसिक स्ट्रक्चर गोटे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताकू चेंज करी हबो नहीं ओके सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेस्टमिनिस्टर कौन वेस्टमिनिस्टर इज द एरिया in which all these important buildings and the seat of United Kingdom is there seat of power okay जेमति कि तांकर जो सब क्वीन माने किंग्स क्वींस माने तांकर डेथ हला परे तांकर सेठी तांकु बरी करंती जो वेस्टमिनिस्टर एबे ओके आउ से पाखा पाखी एरिया रे सब तांकर डिप्लोमेटिक ऑफिसेस तांकर हमर जेमति जनपथ टाइप रो अछि कर्तव्य पथ टाइप रो अछि दिल्ली रे ओके से पूरा से रोड सारा आपण तांकर से वेस्टमिनिस्टर एरिया सारा तांकर सब ऑफिसेस पाइबे ओके सेते ताको वेस्टमिनिस्टर कहै द नेम ऑफ अ प्लेस ओके तापरे 6th को आसंतु सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी सी जेते प्रकार देश आपण देखुचंदी सेतरे आपण ताको डिवाइड करि परिबे तीन प्रकार रे केतेटा देश रे जुडिशियरी सुप्रीम लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स तांकर सुप्रीम कोर्ट रो एते पावर अछि कि से इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी करि परिबे ओके तापरे रहिला एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट जोटा आपण पाइबे यूनाइटेड किंगडम सो इन यूएस द जुडिशियरी इज सुप्रीम इन यूके द लेजिस्लेचर इज सुप्रीम इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम सो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी अछि आउ सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है से जिनसरा को ताको बैलेंस करा हो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी although Indian parliament is not fully sovereign like the UK parliament but parliamentary sovereignty also and there is judicial supremacy in interpreting laws in interpreting the constitution seti judicial supremacy अछि तार ओटे बैलेंस रही ठीक अछि ता जरु केते गुडे कांसेप्ट बाहर आपण देखंतु जुडिशियल एक्टिविज्म हला जुडिशियल ओवररीच हला ओके which we will study when we go to those concepts ठीक अछि पॉइंट नंबर 6 देखले पॉइंट नंबर 7 को आसंतु इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हमर स्टेट रो जुडिशियरी अलगा सेंटर रो जुडिशियरी अलगा समिति नो अमेरिका रे समिति अछि 50 टा स्टेट रो 50 टा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि को स्टेट रे डेथ पेनल्टी अछि को स्टेट रे डेथ पेनल्टी नाही तेनु तांकर जो सुप्रीम कोर्ट सुडा माने तांकर स्टेट रो जो सुप्रीम कोर्ट सुडा सी अलगा अलगा लॉ फॉलो करन and then there is the Supreme Court of United States ठीक है तो सेटा कोन ना integrated no सेटा well differentiated judiciary because each state is following different laws they have their separate constitution हमर कोन गोटिए constitution all the courts of the country India रे से constitution को देखि चलबे ठीक है तेनो हमर हैला integrated judiciary and independent judiciary ता opposite कोन independent judiciary रो बहुत जगह आपण देखिबे कमिटेड जुडिशियरी एटा पढि कि भी प्रीलिम्स से हमें पढिया एटा ए टर्म मन रखंतु कमिटेड जुडिशियरी व्हेन इज अ पर्सन कमिटेड टू समथिंग जेतेबेले से पूरा माने सेटा ही माने और से हिसाब रे काम करे सो कमिटेड जुडिशियरी रे कोन ना जो माने जजेस हेबे अपॉइंट हेबे गवर्नमेंट को अपॉइंट करिवो से गवर्नमेंट रो प्रिंसिपल फॉलो करिया रहती एबे ट्रम्प कोन करले ताकर जो इमिग्रेशन पॉलिसी अगेंस्ट दीटा जज से लोअर जुडिशियरी जजेस थे बाहर कर देले कहीं ना ये जो पॉलिसी इमिग्रेशन पाई कि बाहर लोक आसबेनी यूएस को सेटा फॉलो कले से माने सेठी स्टेफे कर देले तो ताको चाकरी रो विदा हे गले ओके दैट इज ए कमिटेड जुडिशियरी बट इन इंडिया देयर इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आवर जजेस आवर जुडिशियल सिस्टम सेटा कोनोसी मात्रा रे कि कोनोसी आकार रे भी गवर्नमेंट संगे रे रिलेटेड नुह इट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ओके आउ एनजेएसी एक्ट जोडा आगुरु हेतिला सेटा को स्ट्राइक डाउन करिवार सबुठु बड़ कारण भी एटा थिला कि सेटा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को कॉम्प्रोमाइज करथिला ओके सो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी
तापरे 8th point आसिला आपनकर single citizenship. See, in America there is the concept of double citizenship, means you are citizen of the state, you are also citizen of the country. Why? Two constitutions. One is your federal constitution, one is your state constitution. Okay, suppose आपण रहुचंदी अलाबामा रे, मु रहुची कैलिफोर्निया रे. As a resident of California, California रो जो अछि तार constitution, सी मते किछि अलग राइट्स दोथि. आपण अलग जगह रे रहुचंदी, टेक्सास रे रहुचंदी. मु जदि टेक्सास जीबी, किछिटा राइट अछि जोटा आपण को मिलिबो टेक्सास रे, कायना आपण सेठी रहुचंदी. किंतु मते मिलिबोनी कायना मु सेठी रहून. इंडिया रे सेही जिंस नै. Okay, there is single citizenship. You are citizen of the state and also you are citizen of the nation. Okay, single citizenship. Whatever rights you are getting because you are citizen of India. The citizen of state ra concept amara nahi, जोटा कि US रे अछि. Okay, so single citizenship. Single citizenship आउ गोटे भी वे रे आपण कहि परिबे, जोटा हम citizenship जेतले पढिबा काली सेतबे citizenship तो एते इंपोर्टेंट नुहो OJS point of view रो, but still then कि dual citizenship और double citizenship of countries. बहुत गुणे देश रे यूएस रे आपण यूएई रो सिटीजन हे परिबे, यूएस रो भी सिटीजन हे परिबे. दीटा देश रो सिटीजनशिप रख परिबे. इंडिया रे सेमति नै. इंडिया रे जो दिन आपण एक्वायर करे आ गोटे देश रो सिटीजनशिप तार पासपोर्ट एक्वायर करले, योर citizenship in India is automatically terminated. Okay, anyway, सेटा हम देखिबा आते सिटीजनशिप को. कुछ पहले तो सिंगल सिटीजनशिप. So these are some of the important features of your constitution. I am giving you 2 minutes. आपको प्रथम टिके पढ़ी दियन. ओके, तापरे मु जिबी ए जो चैप्टर टा में सारलु जोटा इंपोर्टेंट पार्ट टा तार क्वेश्चंस ऊपर विल डिस्कस 10 questions on salient features of the constitution. Okay, 5 minutes I am giving you. Just read it once. PDF संस्था पाखरे अछि, ग्रुप रे शेयर करथिली, ताको थरे पढ़ दियन. Or if you have any doubts and all, you can ask me. ओके, तारे टे क्वेश्चंस डिस्कस कर दो. एई पैटर्न टा मु फॉलो करी. मु फर्स्ट गोटे थ्योरी टे सारीबी, तार तापरे कोन क्वेश्चंस अछि सेडा हम डिस्कस कर दो. ताले सेडा आपन को मेमोरी रे भी इनग्रेंड हे कि रहि छै. असंदु salient features. Which of the following statements best explain the nature of borrowed features in the Constitution of India? कि जो स्टेटमेंट्स वा देछि borrowed features ର nature कोटा explain करिबो. ठीक है. Borrowed features were adopted without modification and retain original meaning. जेमति कि मु कहली एबे आमे तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करनु, आमे आम देश पे जा दरकार से हिसाब रे चेंज करिछु. जो एग्जांपल मु आपन को देली यूनाइटेड किंगडम रो कि तांका प्राइम मिनिस्टर केवल लोअर हाउस रो हे परिबे. आमे सेम प्रिंसिपल टा आनिलु, किंतु आमे कहलु हमर अपर हाउस भी हे परिबे, लोअर हाउस भी हे परिबे. सो ए इज रॉन्ग. हबन. Borrowed features were adapted to suit Indian socio-political conditions. Correct? ठीक है चेटा. सब गुडा केन देखिबा. Borrowed features were included only from written constitutions. No, United Kingdom रो written constitution ही नहीं. Okay, अब हमें ताटू केते दिन आनी. Borrowed features were judicially imposed post adoption. Judicially imposed. Wrong. हमें borrowed features रा original constitution रे drafting committee रखितला था. So एथरे B टा आपनकर correct answer होछ. B will be the correct answer. That borrowed features are adapted to suit Indian social
political condition. आपण क्लास परे आरो एक्सप्लेनेशन गुडा पढिबे काना एक्सप्लेनेशन गुडा डिटेल्स जदी जिबा ताले बहुत टाइम लाग जिबो काइना एवरेज रे मिनिमम ईच क्लास रे हमें 30 to 50 एमसीक्यूज करिवु फंडामेंटल राइट्स क्लासेस रे बहुत बॉडी जिवो सेटा भी बट so I will just discuss the options काई एटा ठीक नो ओके आउ तार जो डिटेल एक्सप्लेनेशन देछि ताकू टिके पढि दे ओके क्वेश्चन 2 को आसन the concept of procedure established by law in article 21 is primarily derived from which constitutional source eta sources of Indian constitution रे भी आपण पढिबे procedure established by law ओके देखो नॉर्मली कोन हमें एटा बाबू एटा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आछि ओके बट नो ओके ओरिजिनली इट इज फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन राइट सो बी हला तार आंसर क्वेश्चन 3 की आसंदु which of the following correctly identifies the source of the concept of concurrent list in Indian constitution जो concurrent list ता को देशर constitution रो आछि एटा भी sources रे पढि परिबो that is from the Australian constitution okay Australian constitution रे तांकर concurrent list रो concept थिला आमे ताको आनी की modify करू okay Question 4 question to which of the following doctrines, though not explicitly mentioned, has its root partly in borrowed constitutional philosophy? Though not explicitly mentioned, mane eta directly lekha hi nahi se doctrine. Doctrine of eclipse, doctrine of basic structure, doctrine of severability, doctrine of pith and substance. आपण कहि परिबे जो चारिटा doctrine दिया हिची आ भितरे गोटे odd man out किए because 3 doctrines are from basic jurisprudence or natural jurisprudence and 1 doctrine is a judge made or a court made principle जोटा हैला केशवानंद भारती केस रे doctrine of basic structure okay that will be the answer right doctrine of basic structure ता गोटे natural justice रो सेटा आसीनी सेटा judicial intervention की judicial innovation आपण कहि परिबे or it is also called a judge made doctrine or a judge made principle okay then question 5 the principle of rule of law as embodied in Indian constitution is primarily derived from that is the UK British constitutional system okay आपण जदी कहिबे UK England British एता सब एका ना टेक्निकली एका नुह जेतरा आपण यूनाइटेड किंगडम कहउचंती यूनाइटेड किंगडम रे चारिटा कंपोनेंट रहउची तार इंग्लैंड रहिबो वेल्स रहिबो स्कॉटलैंड रहिबो आ आयरलैंड रहिबो ओके सो एगुडा चारिटा को मिसे की यूनाइटेड किंगडम होची राइट तो रूल ऑफ लॉ फेमस जूरिस्ट एवी डाइसी ताकू प्रपाउंड करथिले ओके रूल ऑफ लॉ रो तांकर तीनटा पोस्टुलेट से देथिले कि तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स देथिले ओके ता भितरु आमे फर्स्ट दीटा को एक्सेप्ट करिछु थर्ड टा एक्सेप्ट करू राइट सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम रो आसीची एवी डाइसी ओके से ताकू प्रपाउंड करथिले क्वेश्चन 6 को असंदु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रैशनल बिहाइंड बोरोइंग फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो इट क्लियरली कहि देला कि फंडामेंटल राइट्स आपण यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टू बोरो करचंदी तांकर जो बिल ऑफ राइट्स अछि सेठू बोरो होईची ओके किंतु को कारण पई टू रेस्ट्रिक्ट जुडिशियल रिव्यू रो पावर टाकू कमेवा पई नो सर्टेनली नॉट जुडिशियल रिव्यू भी आपण सेठू ही आनचंदी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो टू एन्श्योर एनफोर्सेबल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट एनफोर्सेबल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट ओके डायरेक्टली जोडा एनफोर्स करियबो द फंडामेंटल राइट्स दैट इज करेक्ट to limit parliamentary sovereignty no to introduce directive principles ta sangiti sampark nahi so b will be the answer to ensure enforceable rights against the state mu jetobale apan ko answer ta kohuchi question ta deuchi apan mane mane bhabi diontu answer ta kon ठीक अछि तो even though it is kana ए सब गुडा क्वेश्चन बैंक फॉर्म रे जान जानी कराई so that you don't waste time एटा क्वेश्चन ता आंसर ता दिया आ गोटे डॉक्यूमेंट रे ता एक्सप्लेनेशन दिया आ गोटे डॉक्यूमेंट रे सेते मु कहली
जो बही आपण किनिबे बहुत जनकर थिबो एमसीक्यू बही जोटा किनिबे आउ आपण को मेन एम हैला मु न्यू एंड न्यू क्वेश्चंस गुडा एनालाइज करबी ऑलवेज बाय ए क्वेश्चन एंड बैंक फॉर्मेट बुक क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट रे कोन हुए क्वेश्चन दिया आइथिबो ता तळे आंसर की दिया आइथिबो ता तळे एक्सप्लेनेशन दिया आइथिबो ओके आपण को बुलेया पई आ मार्किंग करिया पे पड़िबोनी किछ बहुत गुडे परीक्षा मंथन नहीं गला लॉ एंड जस्टिस गला ए माने सब दउचंती सेटा सो प्रिफर दोज काइंड ऑफ बुक्स ओके एनीवे 7 को आसंदु इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विथ सेंट्रल लॉ ऑन ए कंकरेंट सब्जेक्ट द प्रिंसिपल अप्लाइड रिजेंबल्स व्हिच बोरोड फीचर कॉन्फ्लिक्ट रे जेतले कोन हबो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओके आउ हमें पढ़िबा डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी जदि सेटा गवर्नर ताकू रिजर्व कर देथिए प्रेसिडेंट पे और प्रेसिडेंट ताकू ओके असेंट दे देथिबे ताहले ओनली इन दैट केस द लॉ विल प्रिवेल विदिन द स्टेट ओवर द सेंट्रल लॉ नॉर्मली सेंट्रल लॉ शैल प्रिवेल ठीक है सो दैट इज द हमें ऑलरेडी देखथलु सेटा ऑस्ट्रेलियन कॉन्करेंट सिस्टम okay that will be the answer can concurrent list concept which case clarified that borrowed provisions must be interpreted in Indian context rather than original source meaning सब बड़े important case law जुड़ा जो जो chapter पढ़ुछन तार भी टिके टिके मन रखियार अछि जेटा कि गोलकनाथ केस से कराइथिला okay next question 9 the provision relating to amendment of constitution reflects influence from which source amendments of the constitution जोटा कि हमें आर्टिकल 368 और 368 छड़ा भी constitution amend अपन केमति करिवे ओके सो सेटा हला द साउथ अफ्रीकन constitution ओके amendment तापरे last question a particular chapter ro a law student argues that Indian constitution is a bag of borrowings and lacks originality. Which of the following is the most appropriate rebuttal? Constitution is entirely original and not influenced externally. Eta bhul externally influenced achi. Kintu ame amo situation ko dekhi taku badali. Borrowed provisions invalidate constitutional sovereignty. Wrong. Many of our strongest provisions. So sabutu heart and soul of the constitution kono joda baba saheb ambedkar kahitile heart and soul of the constitution that is your direct fundamental rights okay fundamental rights re especially यदि particular article कहबा article 32 right to constitutional remedies okay so सेगुडा हमर इन्वेंशन नथिला हमें सब गवर्नर टू सेटा सब हमें आंसर कोडू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन okay so आउ सेटा सबुटु strongest part of the constitution so borrowed provisions they invalidate constitutional sovereignty something no okay borrowed features are merely symbolic and not functional that is also wrong some of the major features have been borrowed features were integrated with indigenous innovations which is correct हमें आनी कि हम देशर जहाँ दरकार हमें सही हिसाब से ताको चेंज कर so he will be the answer okay तो एटा गला आपण को काम कोन एक्सप्लेनेशन आपण निहाती भाबरे रे पढिबे एक्सप्लेनेशन पढिले कोन ना सेही एक्सप्लेनेशन रो आ गोदिटा क्वेश्चन बाहर मु जदि एक्सप्लेनेशन ऊपर एनालिसिस करबी तो बहुत टाइम लगी जीवो से पे मु स्किप करू के ना हमको बहुत गुडे खाली इंपोर्टेंट इन्स कवर करले एते गुडे इन्स अछि सेटा 6टा सेशन से हबनी हमर 6टा सेशन रो कि 3 दिन 12 घंटा फॉर ईच सब्जेक्ट ओके तेनु 12 घंटा जि रहउची गोटे सब्जेक्ट पई तेनु सेही हिसाब रे मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ा जोड़ा परीक्षा रे पढिवार संभावना अछि सेटा हमें देखिए got it so here we end the salient features any doubts and all you can ask else we go to sources of the constitution okay we'll take a break for 2 minutes and then we will continue with the sources of the constitution
ओके देन लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट जोटा इंपोर्टेंट टॉपिक अपन को भलरे पढिबार अछि सेटा हला सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी 2-3 इयर्स गैप रे गोटे गोटे क्वेश्चन पड़े ओके जो 10टा क्वेश्चन पड़छि कॉन्स्टिट्यूशन रो ता भितरु गैप रे आपनकर 2 इयर्स भितरे कि कंटीन्यूअस पड़ेनी बट ओके जेतरा हम डिस्कस करिवा लास्ट 12-15 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस सेतरा अपन देखिबे सो एतरे कोन ना को सोर्स रु कोन कोन आछे एटा टिके अपन मने रखिया पड़िबो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस सो फर्स्ट आसो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोड़ा मु कहितली कि मदर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके 70% ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन हैज कम फ्रॉम इट सो कोन कोन बोरो कराइतला इथरु फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ द गवर्नर जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमीशन emergency provision and administrative details distribution of power between center and states in Indian constitution eta बहुत important okay power distribution तापरे सेकंड अपन आसंतु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो एथरे कोन चेंजेस एथरु कोन हम सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जोडा मु कहउतली जोडा कि ओटे बेसिक स्ट्रक्चर हम कॉन्स्टिट्यूशन रो आउ सेटा चेंज हेई परिबो तापरे रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर single citizenship cabinet system prerogative writs जोडा writ jurisdiction में कहउछु ओके prerogative writs तक prerogative कहीं को जे कि आगुरु जतले राजा माने दउतले ताको इच्छा prerogative means ताको इच्छा हिसाब ओके तो prerogative writs किंतु हमर इटी इट इज writs आर बेसिकली ओके हम खाली ताको writs कहउछु parliamentary privileges and bicameralism माने दीटा हाउस अपर हाउस लोअर हाउस ओके तो एगुड़ा सबु निया हला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तापरे थर्ड हला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दीटा मोस्ट इंपोर्टेंट तो हे गला फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू ओके फंडामेंटल राइट्स हला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू impeachment of president removal of supreme court and high court judges and post of vice president eta bhi bahut important next irish constitution so directive principle of state policy eta important eta padichi aguru outhare padiyar bi sambhavana achi directive principle of state policy apna anle irish constitution okay ireland constitution nomination of members to rajya sabha and methods of election of president next canadian constitution ru kon apn neichanti federation with a strong center kon pai फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर कैनेडियन गवर्नमेंट जदि अपन देखिबे ओके तो तांकर जो फेडरेशन अछि फेडरल स्ट्रक्चर अछि सेतरे तांकर सेंटर रो पावर ता बहुत अधिका माने स्टेट की प्रोविंस सेगुडा प्राय नॉन एग्जिस्टेंट भी आपण कहि परिबे ओके सो फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन सेंटर रेसिडुअरी पावर्स कोन हमें कहलु तीनटा लिस्ट अछि ओके फर्स्ट लिस्ट है आपनकर यूनियन लिस्ट सेतरे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन अंडर रे जहा जहा सबु से लॉ करि परिबो जो सब्जेक्ट से गुडा अछि सेमति सेकंड लिस्ट स्टेट लिस्ट सेतरे विषय से सब्जेक्ट देछि स्टेट सब्जेक्ट पुरा तबरे कॉन्करेंट लिस्ट सपोज गोटे नुवा सब्जेक्ट आसे जोटा की तीनटा एक लिस्ट रे कोठी भी नाही ताकू कोंती रेसिडुअरी सब्जेक्ट ओके त जते सब रेसिडुअरी पावर्स अछि सेटा दिया है हमारा सेंटर को किंतु यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रे रेसिडुअरी पावर्स का को दिया है स्टेट को ओके हमर भी गोटे स्टेट थिला जा को रेसिडुअरी पावर्स दिया हितला जम्मू एंड कश्मीर किंतु आफ्टर 370 आर्टिकल 370 एब्रोगेट हे गला से पावर टाउ ता पाके नहीं ता माने 370 थिला बेले पूरा देशर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर अलगा कॉन्स्टिट्यूशन थिला आउ रेसिडुअरी पावर्स भी सीए मेंटेन करथला ओके एनीवे तो गला सेटा रेसिडुअरी पावर्स ओके वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटा मन रखियो जे तोर
judiciary संगे related अच्छी. Okay, advisory jurisdiction of the Supreme Court has been taken from which constitution? Canadian constitution. Hello? एबे आसंतु ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कॉन्करेंट लिस्ट जोटा में देखिलु फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एटा इंपोर्टेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन टू नियाई तापरे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी वेमर कोन इट वाज ए टाइप ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके वेमर गवर्नमेंट जोटा थिला जर्मनी रे ओके जिंदी नाजी गवर्नमेंट थिला हिटलर करा सिंधी वेमर गवर्नमेंट वाज आल्सो देयर ओके सो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एथ्रु कोन नेचु सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ओके तापरे पॉइंट 8 को जानतु सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ओके जोटा कि आगुरु यूएसएसआर थिला एबे रशिया अछि फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस ओके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जोटा कोथरे आपण को प्रियम्बल रो जोटा हमें पढिबा सेटा रशियन रेवोल्यूशन रो नियाई ओके दैट इज सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल ओके सेटा कोड नियाई जे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो नियाई राइट लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन रो वार कराय थिला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ओके तेणु both the major revolutions that is the Russian revolution and the French revolution have contributed to Indian constitution okay Russian revolution contribute केमती कला जो justice all the three types of justice सेउटु हमें नेलु तापरे liberty equality fraternity which are cherished goals of our constitution have been borrowed from the French revolution that was the war cry of the French revolution okay point number 10 को आसंतु that is South Africa रू कोन बोलो करले हम constitution procedure for amendment of the constitution okay South Africa रू नियाला and election of members of Rajya Sabha सेटा भी South African constitution रू नियाई and last the Japanese constitution रे procedure established by law so rule of law टा नियाला British constitution रू किबा constitution रू jurisprudence रू ओके ब्रिटेन रो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ठीक है सर आउ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सेटा नियाला जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ओके देख 2 मिनिट्स जस्ट टिके ताको थरे पढी दियन जदी किछि डाउट अछि यू कैन आस्क मी ओके ईदर अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी और यू कैन मेसेज बॉक्स रे भी मेसेज टाइप करते मेसेज बॉक्स मु मझे मझे देखि देबी ओके वंस मु गोटे सेगमेंट सरला परे तो किसी डाउट अच्छे आपण मेसेज रे भी कहि पारि और यू कैन यूज योर you can use the mic also okay depends on yes any doubts anyone जदि के पचरे भी जोन जदि किछि ताले पचरि परिबे or you can message Javi whatever is convenient to you okay fine so now let us come to the questions related to sources of the constitution question 1 देखंतु which of the following statement best explains the nature of borrowed features in the constitution of India ए क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर देथिलु
The concept of procedure established by law in Article 21 is primarily derived from which constitutional source? That is Japanese. Just a minute. I think that I repeat it both times. Okay, no problem. We can I'll discuss that later. Okay, जोटा हमें discuss कलु salient features टा सेटा actually ए sources रो थिला मु कोठी ना sources रो केटा क्वेश्चन अछि तो I think सेटा overlap हे गेछ. Okay, salient features टा change होबो मु ताको change करी कि दे देबी अपन को ये. Okay, और I'll change it and last रे सेटा ए class रो last रे हमें आउथरे discuss कर दबा salient features रो question छोड़ा. एटा salient features लिखा हिची बट ए क्वेश्चन ओडा सबु sources रो. Okay, तो सेटा already हमें सारी सारी sources टा. Okay, salient features just after the end of the class I will again discuss that. Now let us come to the next part, that is preamble. अच्छा, preamble माने कौन? जेमती कि आपण करो गोटे बही आपण पढुचंती तो प्रीफेस अछि. ओके, आपण गोटे कोनोसी हाई सिक्यूरिटी एरिया रे एंट्री करिया पे जाउचंती आपण गोटे आइडेंटिटी कार्ड अछि सेटा को ही देखि कि आपण को से अलाउ करचंती. ओके, preamble हला कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडेंटिटी कार्ड आपण सेमती कहि परिबे. प्रथम रे अछि सेटा. ओके, बट रिमेंबर सेटा सबटु लास्ट रे ड्राफ्ट करा हितला. Preamble although at first was drafted at last. Okay, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रथम एटा स्टार्ट हला कॉन्सेप्ट ऑफ preamble. Okay, इंडियन जो preamble टा हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे preamble टा ता आगुरु गोटे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू आनथिले से तारी ऊपर बेस्ड थिला. Preamble to Indian Constitution is based on objective resolution drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by Constituent Assembly. Preamble ro objective कोन aim कोन, it reflects the minds of the constitution makers. Okay, our amendment थोरिए हिच एटा पढी कि भी हमरो OJS prelims रे कि कोन कोन चेंजेस हेची 42nd amendment. It has been amended by 42nd Amendment Act, which has added 3 new words: socialist, secular, integrity. से जो क्वेश्चन टा पढथिला सेतरे sovereign भी देथिला. Sovereign, socialist, secular, integrity. Which of the following words was not added? ହେଲା sovereign टा फर्स्ट होथिला. ठीक है, तो सेटा आंसर हबो sovereign टा बोलथिला. राइट, सो sovereign was there from the beginning original constitution. In the 42nd amendment रे ए तीनटा ऐड हला socialist, secular और integrity. काहे कि ऐड हला तार ओडे लंबा स्टोरी अछि, but we don't have time for that. Those who take this as their optional maybe say classes हम discuss करते हैं. Okay, so now let us come to the preamble. Preamble रो जो keywords अछि, जो important words अछि से गुडा में देखिबा. Keywords in the preamble, first हला sovereign. Sovereign implies that India is sovereign. माने कोन? माने हमरो इंटरनल आउ एक्सटर्नल अफेयर्स हमें निजे डिसाइड करू. एबे इंडिया रशिया टू तेल आनिबो कि नै यूएस कहि परियो रे तेल नियोनी से कहू तो बहुत तरह कहूची, किंतु हमें मैक्सिमम रशियन तेल ही नोचू कि जहा कहू न कहू एटा करनी हम सेटा ही करछु जदि हम देश में सेटा भलो. ओके, ठीक सेमती इंटरनली. ओके, अमेरिका या कहि परियोनी मणिपुर रे या करो, मिजोरम रे या करो, हम देश में जोटा भलो हम करी. सो गोटे सोवरेन राष्ट्र कोटा ना जोटा कि तार ऊपर किछि इंटरनल कि एक्सटर्नल मैटर से प्रेशर न थाए, से निज हिसाब रे काम कर पारे. बहुत छोट छोट देश अछंती, दे आर लाइक vassal states. Vassal states माने से आउ कोनोसी बडो पावर द्वारा कंट्रोल होचन. Let's say for example Puerto Rico. Puerto Rico टा one, it is considered to be a territory of United States of America. If you are a Puerto Rican citizen, अपन Puerto Rico citizen, you have the option अपन American citizenship पाई परिबे आराम. Okay, so हमरो से सब जिंस नाही, we are completely sovereign country. Right, तापरे हला औ से जेतु हमें completely sovereign. Okay, हमें हमरो जे लीडर अछंती हमरो प्रेसिडेंट, he is our head of the state. हमें अन्य कोनोसी हेड ऑफ द स्टेट को हम हेड ऑफ द स्टेट मानु.
जोटा रिपब्लिक रे हमें पढ़िबा राइट सो सोशलिस्ट Congress party itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its Awadh session. Socialist pattern of society कौन socialism कौन तो बहुत बड़ा डिबेट है जो socialism कौन एटी कहया गले कि distribution of resources जेमती प्राय equal रहिबो haves and have not भितर difference टा कम रहिबो जो natural resources और general resources अच्छी ता लाभटा समस्त को मिलियो that is the concept of socialism से ता ऊपर socialism रो बहुत प्रकार अच्छी ओके गोटी कम्युनिज्म आसी गला पूरा एक्सट्रीम फॉर्म रे बहुत अलग प्रकार रो socialism भी अच्छी more or less equitable distribution of resources ओके तो हमरो भी socialist country से हिसाब रे बट आमे जो socialism फॉलो करछु सेटा हला democratic socialism तो अर्थ हला या कि हमर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किबा पूरा तो सेम हे परिबोनी किंतु पाखा पाखी जांग पाखे अछि तांगटु टिके आनी कि जांग पाखे नाही तांको केमती हमें दबा दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो हमें सेटा करू छु बहुत प्रकार जेंति कि सुपर रिच टैक्स अछि सरचार्जेस अछि जे गोटे दउची 30 40 लाख रो इनकम अछि ताले ताको अधिक टैक्स दो पे पड़ुची हला जार इनकम नाही कि कम इनकम से टोटल टैक्स दोनी बुझी परले ओके तेणु सेटा माइंड रे आपन को रखिया पे पड़ियो ओके सो सोशलिज्म की सोवरेन सोशलिस्ट पर जो आसिला दैट मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ओके जोटा कि हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहू किंबा स्टेट सोशलिज्म नुहो एटा स्टेट सोशलिज्म कोन जोटा कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म ओके तो आमर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रे गांधीयन वैल्यूज अच्छी मार्क्सिस्ट वैल्यूज भी अच्छी ओके बट इट इज लीनिंग हेवीली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म व्हिच इज स्टेटलेस सोसाइटी ठीक है नेक्स्ट सेक्युलर तो ओरिजिनली ये वर्ड भी नथिला एटा भी 42nd अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस कराला ता माने या नो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कि हम पॉलिटी अगुरु सेक्युलर नथिला इट वाज सेक्युलर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल अपन जदि देखिबे ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया जो प्रथम बड़ साम्राज्य अपन कहला द मौर्यन किंगडम सी भी सेक्युलर थिले ओके एमति नो कि मोर एनिमीज रो धर्म अलगा तो तांको मु धर्म ऊपर मारिबी सेटा मेडिवल इंडिया रे स्टार्ट हला परे ओके बट एनीवे सो सेक्युलर दैट मींस the state does not have a state religion but the state gives equal importance to all religions the state is not irreligious किसी घृणा करे नहीं धर्म so our form of secularism is completely different from the French form of secularism French secularism में कौन तांकर complete dissociation of the religion and the church okay कहीं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन रो हिस्ट्री से सब जिंस आपण देखिबे जदी इंडिया रे कोन थिला कि कोन अछि ना हमर एठी रिलेशन अछि बट इंटरडिपेंडेंस अछि बट देन दे आर ऑटोनोमस रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनल काम रे पसिबनी कॉन्स्टिट्यूशन से सब काम रे पसिबनी कि जोठी कि ओनली रिलीजन सेटा डिसाइड करिया कथा मु को ठाकुर को मानुची ओके सी जन्म कोठी ही चंदी तांकू मु केमिति पूजा करिवि सेटा कोर्ट मते कहबन ओके कोर्ट रो लोक स्टैंड भी सेते किछि नहीं राइट गवर्नमेंट से जिंस रे कि कॉन्स्टिट्यूशन सेम एड्रेस रे पॉसिबल ओके सो पूरा बैलेंस करी कि रखाई राइट आपण देखंतु फ्रांस रे यदि पब्लिक स्कूल को जिबे तांकर सेठी कोनोसी रिलीजियस सिंबल्स अलाउड नहीं आपण स्कल कैप लगे परिबेनी तिलक लगे परिबेनी क्रॉस पके परिबेनी टर्बन लगे परिबेनी ठीक है बट इंडिया रे देखंतु ओके आपण जो भी धर्म रो अछंती इवन स्कूल कॉलेजेस को भी आपण धर्म रो जा भी अछि सिंबल्स ताको पिंदी की जाउछन केही मना करियो नहीं ओके सो सेक्युलर सेटा हला थर्ड तापर आसिला वेरी इंपोर्टेंट दैट इज डेमोक्रेटिक अच्छा डेमोक्रेटिक माने कौन गवर्नमेंट दैट इज फॉर द पीपल
of the people and by the people. आज जमती गोटे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी रो रिजल्ट्स आसुची आपण पांचटा चारटा स्टेट गोटे यूनियन टेरिटरी रो चलुची एबे काउंटिंग ओके माने पावरटा लोकन पाखरे लोक जाकू इच्छा ताको इलेक्ट करबे से भी बहुत प्रकार रो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोट छोट देश जेंति स्विट्जरलैंड करी करे यूरोप रे सेठी प्रैक्टिस हुए ओके जेंति की आपणकर एटी जो देखंतु रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल एंड प्लेबिसाइट रेफरेंडम कोन ना जनरली गोटे क्वेश्चन पचरा हबो लोकन को ओके कि एटा कोन करिया कथा से माने डिसाइड करिवे से कहबे हां कर ताले करा हबो ना करनी ताले गवर्नमेंट करिवनी से भी तार भी विभिन्न प्रकार अछि गोटे बाइंडिंग रेफरेंडम था ओके जनरली रेफरेंडम बाइंडिंग था बट सेटा बाइंडिंग की नॉन बाइंडिंग ठीक अछि सेटा रेफरेंडम इनिशिएटिव कोन इनिशिएटिव हला कॉमन लोक माने लॉ बनै की तांकर जहां को से माने रिप्रेजेंटेटिव करी की इलेक्ट करी की पठै जदी तांको धरे देबे सपोज मते गोटे लॉ टे दरकार एई जिंस पे तो सिटीजन्स माने हम बसिलु गोटे ड्राफ्ट कलु बिल टे ताको देलु हमर जे एमपी अछदी कि एई बिल टा हमको दरकार पास होबा दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव हमर कोन होची नॉर्मली हमर एमपीस माने कि पार्टीज माने ओके पार्लियामेंट तार लॉ बनौची डायरेक्टली से लॉ रे कोन होबा कथा कोन न होबा कथा हमर से नहीं ऑल्दो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स मगा हुए गोटे नुआ बिल आसीबो तो पचरा हबो से पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पचारे कि आपनकर मत कोन से मतोडा पब्लिश भी हुए ओके दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव तापर एला रिकॉल जोटा हम देश रे बहुत दरकार रिकॉल माने कोन फेरे आनिबा ओके आमे जण को इलेक्ट कर देलु एज एमएलए कि एमपी से काम कलानी ठीक है ताले हम पाखे बाट कोन अछि आमे रागी की रहिबु ठीक अछि 5 वर्ष जाऊ ताको बतेला ताने 5 वर्ष पैसा भी नष्ट हो से काम भी करबनी व्हाटएवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे रिकॉल रो सिस्टम अछि काम करनी ठीक अछि भाई रिकॉल आमे आको फेरे जाऊ बाकी जो टाइम बळिला 6 मास 5 वर्ष 6 मास ये काम करनी ताले बाकी 4.5 इयर्स आ गोटे लोक अछि ओके बहुत पावरफुल है दैट इज कॉल्ड रिकॉल आउ लास्ट हला प्लेबिसाइट भी रेफरेंडम भलिया किंतु प्लेबिसाइट रे कोन ना जमी ओके रिलेटेड आपनकर से प्लेबिसाइट ता हुए जेंति कि एबे हमें प्लेबिसाइट करेबे जे कि कोडी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रे धरंतु कराबो कि से लोक माने रहया पे चाहते कि नहीं ऑल्दो इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया डी प्लेबिसाइट होई कि दरकार नहीं काली की धरंतु पाकिस्तान रो से बलोचिस्तान वाला कहबे कि भाई हमको इंडिया रे मिसियर अछि ओके तो फॉर एग्जांपल कोची ओके ओटे हाइपोथेटिकल सिनेरियो तो हमें सिटी प्लेबिसाइट करे दो कि के जन चाहते आसे में प्लेबिसाइट जनरली टेरिटरी किंबा जमी संगरे रिलेटेड थाए ओके क्रीमिया मने अछि आपनकर क्रीमिया रे कोन हला क्रीमिया ओरिजिनली वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन किंतु क्रीमियन कल्चर ता से तांकर लैंग्वेज बरिका रशियन थिला तो तांको लोक कहले भाई हमें यूक्रेन संगे रहया पे चाहुनु हमें रशिया संगे रहया पे चाहू तो सेठी गोटे प्लेबिसाइट हे गला प्लेबिसाइट हला ये कहले हमें पळी ओके आउ तापर रशिया तक एनेक्स कर देला ओके सो दैट इज प्लेबिसाइट so these are the 4 devices of direct democracy referendum initiative recall plebiscite direct democracy आम भलिया बड़ बड़ देश रे साउथ ईस्ट एशिया एशिया रे जो बड़ बड़ देश अछथि एठी आपण करि परिबे नाही ठीक अछि तो एठी हमर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आमे एमएलए एमपी को इलेक्ट करछु से माने हम पई लॉ बनौछु से माने हमर भलो मंदटा देखिछ ओके सो दैट इज बेसिकली डेमोक्रेटिक तापरे आसीला रिपब्लिक कोन ना हेड ऑफ द स्टेट जे थिबो जंती हमर हेड ऑफ द स्टेट किए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आवर हेड ऑफ द स्टेट ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आवर हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड ओके हमर 5 वर्ष पई को देश रे 6 वर्ष अछि को देश रे 4 वर्ष अछि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड सेते हम आपन पासपोर्ट देखिबे इंडियन पासपोर्ट कोन लिखाई भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया राइट रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखाई किंतु आपण यदि सऊदी अरेबिया रे देखिबे ताकर कोन लिखाई किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इस्लामिक किंगडम सेटा राजा गोटे किंग अछथि सेति किबा सल्तनत अछथि ओमान रही गला कतार रही गला ओके ताकर सुल्तान अछथि सेति
सल्तनत सेटा ठीक है। सो यूनाइटेड किंगडम रो जदी आपण देखिबे सेटा किंगडम ताका राज्य अछंती भूटान किंगडम ताका राज्य अछंती ओके बट वी आर ए रिपब्लिक काइना हमरो हेड ऑफ द स्टेट जे हला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी कोन ना सी इलेक्टेड ओके हमरो पॉलिटी रे दीटा हेड्स अछंती गोटे हेड ऑफ द स्टेट गोटे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट हले आपण प्रेसिडेंट हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन आउ हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेले प्राइम मिनिस्टर ठीक है। सो रिपब्लिक रो कांसेप्ट से जेहेतु आम गोटे रिपब्लिक से आम सोवरेन कंट्री से आम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन रे जॉइन करिछु किंतु वी डू नॉट कंसीडर द क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड एज आवर हेड ऑफ द स्टेट अन्य माने करंती ऑस्ट्रेलिया करे न्यूजीलैंड करे आउ केतटा से ओशिनिया रे देश अछंती से माने करंती आमे करूना आमे कॉमनवेल्थ रो पार्ट बट आवर हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रथम एतले आमे कॉमनवेल्थ रे गलु ओके तो आमर जो इंडिपेंडेंट इंडिया रो रिपब्लिक इंडिया रो कॉमनवेल्थ एतले पसिलु सेटा गोटे ऑब्जेक्शन थिला केना आपनकर जो गॉड सेव द क्वीन क्वीन को सामने रे मुंडन हेबो सेटा आमे गोटे मार्क ऑफ रेस्पेक्ट रे करछु आमे क्वीन की आपनकर गोटे हेड ऑफ द स्टेट हिसाब रे मानि परिबो नाही ओके दैट वाज अग्रीड एंड इंडिया स्टिल इज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ हला जस्टिस जस्टिस आसिला सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑल टाइप्स ऑफ जस्टिस जोटा की रशियन रेवोल्यूशन रो नहीं सोशल जस्टिस कोन ए जो कास्ट क्रीड ए थरे सब आपण डिस्क्रिमिनेशन करिका हेतिला तो रिजर्वेशन हे गला ओके रिजर्वेशन से गला कि आपणकर एई कास्ट रो लोक को एतिकी परसेंट रिजर्व कराओ तो एग्जांपल ऑफ सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस सबू रिलीजन हो जेंडर हो ताको संगे जेमति कि सेम पे फॉर सेम वर्क आपण काली जज हे जिवे आपणकर भौणी की भाई भी जज हे गले सो यू आर वन मैन वन वुमन सबू सर्विस कंडीशन सेम ओके किछिटा जेंडर स्पेसिफिक कंडीशन को छाड़ देले व्हिच इज लेट्स से मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव सेम सैलरी मिलियो ओके सेम क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन सेटा आगु हो नतला एबे भी आपण देखिबे एबे तो बहुत चेंज हेलानी बट स्टिल मु ऑर्गेनाइज सेक्टर कथा कहली अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखंदु जो माने वर्कर्स अछंती लेबरर्स अछंती ओके आपण देखिबे जो छात्रबात पड़े वुमन लेबरर्स को बेसी कॉन्ट्रैक्टर आने काहे से 100 टका कम दबो ता बुझि बाउछन सो से जिंसटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे भी अछि राइट सो इकोनॉमिक जस्टिस थर्ड हैला पॉलिटिकल जस्टिस तार बेस्ट एग्जांपल हैला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज आपण पाखे जिते पैसा थाऊ न थाऊ आपण जिते पाठ पढ़थांतु न पढ़थांतु ओके आपण बयस यदि 18 ऊपर यू कैन गिव वोट एक्सेप्शंस अछि यदि कोर्ट मना कर दिछि आपण को जेमति बाला साहेब ठाकरे को मना कराइतला थरे ओके ताले आपण दे परिबे ठीक अछि किबा आपण अक्यूज अछंती जेल रे अछंती इलेक्शन लड़ी परिबे किंतु वोट दे परिबे ठीक है सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज दैट इज एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस तापर आसिला लिबर्टी तो लिबर्टी मीन माने कोन लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ओके तो से फ्रीडम दा आपन को रहउची आर्टिकल 19 रे आउ आर्टिकल 21 रो भी बहुत जगह रे बट मेनली आर्टिकल 19 रे आपन को ओके फ्रीडम्स मिलुची छटा फ्रीडम ओरिजिनली 7टा थिला राइट टू प्रॉपर्टी टा पळेला तो एबे छटा फ्रीडम अछि तापर हैला इक्वालिटी ओके इक्वालिटी एवरीवन इज इक्वल रूल ऑफ लॉ का अर्थ कहलु ओके दैट इज द absence of any special privilege ठीक है and adequate opportunities for all सेतरे दीटा कंपोनेंट रहला इक्वालिटी बिफोर लॉ आउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा फंडामेंटल राइट्स रे राति रे मु आउरी डिटेल्स रे पढेबी इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो एटा इक्वालिटी कला तापर आसला फ्रैटर्निटी माने कोन ब्रदरहुड दैट ऑल इंडियंस आर यू नो लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ठीक है आ मु जदी को गोटे देश को जाउची मु सेठी कोन करबी मु मो देश विरुद्ध रे कहबी ना एया देखिबी कि मो देशर नाटा जेमती आगु जीवो ओके
ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କହିବେ ରାଇଟ୍ so fraternity means brotherhood the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation integrity has been added to preamble by 42nd amendment okay जो हमें देखिलु amendment to the preamble sorry ही okay so आउ देखिबा preamble टा constitution ର part की इनिशियली डेरिवेटिव यूनियन केस रे सेटा कोआगला ना पार्ट नुह तापरे केशवानंद भारती परे सब केस रे कोआइछि इट इज अ पार्ट ओके बट इट इज नॉन जस्टिशिएबल किंतु इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पई इट इज लाइक ए लाइट हाउस रो काम कोन गोटे शिप जाउछि से ताको देखेबो एटा हला बाट से बाटटा देखुछि ओके सो सुप्रीम कोर्ट can use the preamble as a tool for interpreting the constitution okay can preamble be amended yes it can be amended ठीक अछि किंतु preamble रो जो आपनकर अछि important basic features गुडा से गुडा को amend करियो for the betterment ठीक अछि for the betterment किंतु काढी देबे कि कोन करियो से गुडा करियो कष्ट right so 2 minutes के देखो तो बेटा then we will go to the yes someone is asking any question then you can ask okay let us discuss these questions which of the following correctly explains the legal status of the preamble after the decision in Keshwananda Bharati versus State of Kerala it already I କହିଲु it is a part of the constitution okay and can be used to interpret its provisions right that will be the correct answer yeah students माने टिके माइक आपनकर ऑफ पोजीशन रे रखिथंतु क्लास रे अदरवाइज सेतर इंटरफेरेंस होची जेतेबेले क्वेश्चन पचारिबार थिबो आपण अनम्यूट करिकि पचारि परिबे वंस क्वेश्चन टा पचारि देले आपण आंसर मिली गला पुनी आउथरे म्यूट कर देबे ओके अदरवाइज से इंटरफेरेंस साउंड टा पूरा रहइबो ओके क्वेश्चन 2 को बेसंतु which of the following terms are added to preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 Republic Socialist Justice की liberty कौन टा होगा that is socialist secular okay how integrity right question 3 के असंतु which of the following best explains the term sovereign in the preamble India is subject to international law supremacy India has तामाने कोन इंटरनेशनल लॉ जो कहबा हम सब माने पर सेटा में मानु किंतु नॉट इन मैटर्स ऑफ सोवरेनिटी इंडिया हैज एब्सोल्यूट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस व्हिच इज करेक्ट बी विल बी द आंसर अच्छा एटा टेस्ट सीरीज रो टेस्ट सीरीज 17 रु आरंभ हो टेस्ट सीरीज रो गोटे जिंस आपण देखिबे
ସେଥିରେ गुडे ऑप्शंस थिबो जोटी आपण डिसाइड कर परिना एटा ठीक ना एटा ठीक ओके एते क्लोज थिबो सेडा सबल मन रखिबे एमसीक्यू परीक्षा रे जदी क्लोज लागुची आपण को दीटा ऑप्शन ताहले सबु बेले सेथरे कोन करिवे ना जोटा सबुटु अधिका ठीक लागुची सेईटा को ऑप्शन आंसर करिवे ओके काहे ना आपण जानचंदी कि ओपीएससी रो गोटे जिनस अछि कि सबु बेले भूलभाल क्वेश्चन पके कि तापर प्रो रेटिंग करे ठीक है तो सेटा को हमको माइंड रखिवार अछि सेत पई बहुत कम अटेम्प्ट्स कले असुविधा बहुत अधिक अटेम्प्ट करदेले भी असुविधा जदि जानिचन तो बहुत भलो ओके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन which of the following cases held that the preamble is not a source of power but can guide interpretation okay very important berubari union case okay तो से तो प्रथम कहले कि पार्ट टा नुह किंतु कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिया पे यूज करा ही परिबे ओके आ बाकी बाकी कौन सब सेटा देखंतु सेते कहली क्लास पर एक्सप्लेनेशन टिके भलो रे देखिबे ओके it is not a source of substantive power but it can be used for interpretation later modified in Keshwananda Bharati case जो ठीक हुआ लगी एटा part of the constitution Minerva Mills emphasized harmony between हम पढ़िबा doctrine of okay जेमति कि आपनकर directive principle of state policy आउ fundamental rights भितर harmonious construction रहिबो doctrine of harmonious construction Bommai emphasized secularism okay also Bommai रे secularism थिला आउ गोटे जो emergency powers ऊपर भी थिला okay so these are the things explanation टा निहाती पढ़िबे मु एटी पढ़नी काहे ना बहुत टाइम लागि okay which of the following correctly reflects the concept of secularism in preamble state promotes only one religion wrong state has no religion and treats all religion equally this is the correct answer religion is completely banned that is not the case in China रे अछि okay atheist देश से माने देश तीन प्रकार रा थाए गोटे सेक्युलर कंट्री लाइक अस जो माने कि सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करंती सब रिलीजन को अलाउ करंती जे जा फॉलो करता तापर आसिला थियोक्रेटिक स्टेट्स माने जो धर्म ऊपर आधारित से जेमति कि गोटे मुस्लिम देश होय गला गोटे क्रिश्चियन देश होय गला ओके गोटे हिंदू देश होय गला हिंदू देश आगुर नेपाल थिला एबे तो कि हिंदू देश नांदी तो सेटा कि गोटे ज्यूइश कंट्री हे गला ओके इजराइल भलिया सेटा हैला थियोक्रेटिक स्टेट मींस दैट स्टेट इज बेस्ड ऑन अ रिलीजन आउ तापर आसिला नंबर 3 एथिस्ट स्टेट्स माने जो माने भगवान कर ये रे मानते चाइना हरिका जेमति आउ केतेरा सेमति कम्युनिस्ट देश अछन सोडा एथिस्ट स्टेट्स ओके so state has no religion and treats all religions equally b will be the answer tapare question number 6 question to a law restricts liberty of expression without reasonable basis which preamble value is directly affected hala what a law restrict करूची freedom of liberty of expression ठीक अछि तो कोन आपन लिबर्टी टा नै गला से मु जहा भाबी भी मु जहा लिखि भी सेटा कर परिबी राइट तो मझे मझे देख जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो के भी होबनी हला तो मोर एप्रोप्रिएट वुड बी लिबर्टी क्वेश्चन 7 को आसंतु which of the following correctly states the nature of equality which of the following correctly states the nature of equality in the preamble absolute equality without exceptions exception तो अछि equality रो ओके कोन एक्सेप्शन अछि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एमएलएस एमपी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ताको आ आपनकर जो सब एम्बेसडर्स माने अछंती डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज से मानु को एक्सेप्शन दिया तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी विदाउट एक्सेप्शन नहीं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सेटा दिया ओके which of the following emphasize that secularism is a part of basic structure derived from preamble so SR Bommai versus Union of India okay although fundamental case was okay for article 356 okay misuse of that but सेतरे बहुत गुडा अलगा जिंस भी कोआइतो राइट
Golaknath, amendment power. Shankari Prasad, validity of amendments. And ADM Jabalpur, emergency rights upare. Okay. Important case laws 50-60 टा अछि सेटा लास्ट दिन माने पर दिन हमें ताको देखिबा. Okay. Next, a constitutional amendment removes the word democratic from the preamble, which is correct. So valid as parliament has absolute power, invalid as it violates basic structure. So it I hope democratic, okay, ताको remove कर देला preamble रो. एटा गोटे कोन basic structure of the constitution रो part. तो एटा करि हबने. Which of the following best express fraternity in the preamble? Fraternity means brotherhood. Okay. Brotherhood ensuring dignity and unity of nation. That will be the answer. Okay. So, खाली गोटे repeat हे जाई कि जोटा first salient features ता. Okay. I will just give that again so that salient features ता. Or else what we can do, रातिरे हमें fundamental rights start करिवा. Fundamental rights start करिवा आगुरु. Okay, मु सेटा discuss कर देबी. Right. So, next, union and its territory of citizenship भितरे खूब कम जिंस अछि. सेटा मु सेई टाइम रे आपन कहि देबी. ओके एटा पढिवार किछि नै आर्टिकल्स आमे सीधा फंडामेंटल राइट आर गोटे खाली इंपोर्टेंट अछि सेटा मु कहि देबी. ओके सिटीजनशिप केमिति पाइबे केमिति हरइबे सेटा सेति खाली जानियार अछि आउ किछि नै. बाकी all these things are not required for judicial service. एटा को हमको भलरे पढिवार अछि. आर्टिकल 12 to 35 गोटे गोटे करी सब आर्टिकल कारण आ ऊपर दीटा क्वेश्चन गोटे आसी 10 टा 2टा तो 20-30% हमर श्योर हे जो हम आंसर करी. ओके सो एनी डाउट स्टिल नाउ यदि किछि डाउट अछि ए पर्यंत ताले मते आपण पचारि परिबे. No? Okay. So we'll stop here then. रातिरे राति 8 रे हमें फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट जो क्वेश्चंस वा रिपीट हेती सेटा टिके डिस्कस कर दवा तापरे फंडामेंटल राइट्स ता स्टार्ट करी. ओके we'll start with fundamental rights. Okay, so we'll stop here then. Thank you all. Namaskar. So namaskar all of you. Is my voice audible? सुनी पाउछन तो clearly? Yes, sir. Okay. तो हमें सकाळे जो क्लास रे जो क्वेश्चन टा रही जाइथिला फर्स्ट सेटा डिस्कस कर दबा तापरे हमें आसीबा फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है जोटा सेलिएंट फीचर्स रो से सेम क्वेश्चन हे जाइथिला सोर्सेस आउ सेलिएंट फीचर्स. तो प्रथमे 10 टा क्वेश्चन सारी जेहेतु हमें सेलिएंट फीचर्स चैप्टर टा कंप्लीट कर देइथिलु सकाळे तार कोन कोन क्वेश्चंस इंपोर्टेंट अछि सेटा टिके देखितो. क्वेश्चन 1 को असंतु which of the following best captures the nature of Indian federalism as a salient feature of constitution. Okay ए जो फीचर्स रा देछि आ भितर फेडरलिज्म को फीचर टा करूछि. It is a rigid federation with absolute state autonomy. तो हमर तो rigid federation नो flexible और absolute state autonomy में हमर नाही. ओके माने एब्सोल्यूट स्टेट ऑटोनॉमी माने स्टेट रो सब पावर अछि. ओके हमर कोन सेंटर रो अधिक पावर स्टेट को ता पावर दिया प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर हिच किंतु बेसी पावर सेंटर पाखे.
Okay, तो Indian federalism ऊपर से कोई it is a unitary system with no federal element. Okay, कि खाली सब पावर आपनकर सेंटर पाखरे अछि सेटा भी भूल कथा. Okay, distribution of power से सेंटर और स्टेट भितर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन न होइते पारे माने सेंटर और स्टेट रो इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट न होइते पारे किंतु डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो हिच. Okay, it is federation with strong unitary bias. So federation माने स्टेट रो पावर्स अलगा अछि सेंटर रो पावर्स अलगा अछि with strong unitary bias माने पावर आपनकर ओके सेपरेशन ऑफ पावर्स हिची किंतु तथापि सेंटर पाखरे अधिक पावर अछि. सो सी विल बी करेक्ट. बी इट इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स. कॉन्फेडरेशन में कोन होय फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन भितर डिफरेंस कोन. कॉन्फेडरेशन रा लूजली बाउंड माने गोटे स्टेट चाहिले से तरह सेडू सेसीड कर दे परिबो खसी की पळी परिबो ठीक अछि सेटा किंतु फेडरेशन रे से जिंसटा अलाउड नै. ओके तो सी इज द आंसर. आपण माने तार एक्सप्लेनेशन देखिबे एक्सप्लेनेशन डिटेल रे देछि तेनु सेटा समय लागिवो सेटा आपण टाइम देखियो हम बहुत गुळे क्वेश्चन डिस्कस करिया पे अछि तेनु मु बेसिक कांसेप्ट आपण कहि दोछि बट तार एक्सप्लेनेशन पार्टटा आपण ऐप रु ताको देखिबे. Question 2 को आसंतु which of the following best explains the significance of preamble as a salient feature. It is enforceable in courts independently. Preamble टा कोन independently enforce करि हबो preamble रे जा लिखाइ छी suppose तार violation हला can it directly be enforceable? So certainly not. It is a part of constitution and aids interpretation. बेरुबार यूनियन केस से कोइला केडा पार्ट नुह किंतु तापरे केशवानंद भारती और तापरे जते केसेस आछि कोउची कोन इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सही पोजीशन टा अछि. सो बी विल बी द आंसर. आउ सुप्रीम कोर्ट बहुत तरह कहिचंदी कि ऑल्दो सेटा डायरेक्टली ओके एनफोर्सेबल नुह किंतु सेटा इट एड्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके जदी को जगह रे गोटे जणा पडलानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहया पे चाहूची ताको इंटरप्रेट करिया पे प्रिएम्बल टाको यूज करी हबो. ओके it overrides fundamental rights in case of conflict. No, it is merely decorative and has no legal value. It has huge legal value because it is to be used to interpret the constitution when things are not very clear. Okay, so B hobatara answer. Next question ko asantu. Doctrine of basic structure primarily protects which salient feature? Okay, so parliamentary sovereignty, absolute executive power, essential identity of the constitution. Say objectives of the constitution, essential identity of the constitution. That is the correct answer. B hela supremacy of legislature over judiciary. That is not true. Okay, salient features, basic structure doctrine ta को salient feature को protect करू. Okay, essential identity of the constitution. तापर question 4 को आसंतु. Which of the following reflects the essence of secularism as a salient feature? State has its own official religion. No, amaro secular state official religion kichu na thae. State treats all religions equally. That is correct. Okay, all religions are equal before the state. State prohibits all religious practices. No, jemti ki China vari kare today atheist countries achandi. Okay, and state gives preference to majority religion. That is also not the case. So B will be the correct answer. Ebe asantu question 5 ku. Which of the following is the most appropriate description of single citizenship in India? India रे जो concept अछि single citizenship रो कि आपण केवल इंडिया रो सिटीजन आपण आपण स्टेट रो सिटीजन नुह ठीक अछि तो सेही हिसाब रे most appropriate भितर कोटा only union confers citizenship rights. Correct. You get all your rights because you are citizen of India. There is no concept of citizen of Odisha. जेमति कि यूएस रे अछि तांकर सेठी स्टेट रो अलग राइट्स आउ तांकर फेडरल माने यूएसए एज अ कंट्री तांकर सेटा कॉमन राइट्स. ओके सो सिटीजन्स हैव डुअल राइट्स इन सेंटर एंड स्टेट. एटा यूएस रे हुए इंडिया रे हुए नी. स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट सिटीजनशिप लॉस. नो, citizenship is granted only during emergencies. Okay, so A is the correct answer. Question 6 question to which case recognized judicial review as a basic feature of the constitution? So A.K. Gopalan, okay, L. Chandra Kumar. So judicial review as basic feature of the constitution. Okay, so
tapare Golaknath and Shankari Prasad. So B is the correct answer. Okay, reaffirm judicial review. Question 7. Consider a situation where Parliament amends the Constitution to remove judicial review. Which feature is directly violated? Okay, the Parliament रे गोटे पार्टी रो बहुत मेजॉरिटी आसी गला से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिया पे चाहउछन जुडिशियल रिव्यू टा हटे देबा पे चाहउछन. Okay, so which of this will be correct? Which feature is directly violated? Federalism. Federalism माने सेंटर और स्टेट भितर relationship टा सेटा होनी. Basic structure. So judicial review is a part of basic structure of the constitution. Okay, so सेटा that will be directly violated. So B will be the correct answer. Secularism and parliamentary system सेगुड़ा particularly violate होनी judicial review को remove कले. Indirectly होची, directly होनी. ओके तेणु एमती बहुत टाइम क्वेश्चन पड़ो जो कि ऑप्शन गुड़ा पाखापाखि सेम लगुथिबो सबुटु जोटा आपन को लागुची जो ऑप्शन टा ठीक अछि सबुटु जो ऑप्शन टा आपन को क्लोज लागुची सेही ऑप्शन टा आपन को मार्क करिवार अछि. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बी. ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 8. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स correctly explains parliamentary system as a salient feature? Parliamentary system. Executive is independent of legislature. No. Executive माने कोन आपनकर जो ऑफिसर्स माने अछंती इवन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से माने को लेजिस्लेचर रु इंडिपेंडेंट से माने जहां भी करिवे से माने को पार्लियामेंट की स्टेट लेजिस्लेचर आसी की तो कैंसर दो अपन पड़िबो राइट. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. Executive is responsible to the legislature. That is correct. Okay, so जहां भी अपन एग्जीक्यूटिव एक्शन होउची okay they have to you know चली की भूल भाल कोली कॉल they are answerable to the legislature. Okay, then judiciary controls executive directly. That is not correct. President exercises real executive control. That is also not correct. Prime Minister or Council of Ministers सेटा करन the central level रे और Chief Minister और ताको Council of Ministers सेटा करन the state level. So B is the correct answer here. तापरे question 9 को संतु केस ऊपरे case law. Which of the following cases held that secularism is a basic feature of the constitution? So Bommai versus Union of India, Minerva Mills, Indira Gandhi versus Rajanarayan, or Keshwananda Bharati. So this is Bommai. Okay. Then question 10. A state government passes a law violating equality before law. Which salient features is directly affected? जदि equality before law टा violate हबो आ भितर कोन कोन आपनकर violate हबो? Federalism नहीं सेटा सेंटर ऑफ स्टेट भितर सेटा डायरेक्टली violate होनी. Secularism, directive principles, rule of law. Okay, rule of law टा directly violate होची. Okay, जोटा में equality before law, equal protection of law जो जिनसटा में पढुछु. कुछ पहले एटा हमें पढि दितलु सकाळे जेतु सेटा डबल थर रिपीट हे जेतला क्वेश्चन टा सेत बिफोर स्टार्टिंग फंडामेंटल राइट्स मु एटा डिस्कस कर देम. ओके नाउ कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 ऑलरेडी आर्टिकल 12 टू 35 10 टा क्वेश्चन ईच सेक्शन रा आपन को ऐप रे अपलोड हे जेची. ओके सो आमे देखिबा कोन ना जोडा इंपोर्टेंट सेक्शंस अछि. ओके तारो सेगुडा आमे डिटेल्स से ताको देखिबा. ओके any doubts if you have then you can ask me, else we will start with fundamental rights, or it is called the Magna Carta, okay, of the Constitution of India. काहे ना एई थरे जो राइट्स गुडा देची एई गुडा आपण जाईकी सीधा एनफोर्स करि परिबे. These are enforceable rights. These protect the rights of the citizens as well as some rights also protect the rights of the aliens माने non citizens जो. Okay, you go through the MCQs जोटा में देखिलु जल्दी take 2 minutes. If you have any doubts you ask them, else we will start with fundamental rights. Part 3 टा में start करियो. So fundamental rights को असर
ओके आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स रो किसीटा फीचर्स प्रथमे जानंतु तेणु फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 रे अछि आर्टिकल 12 टू 35 किंतु एक्चुअल राइट उडा आपनकर अछि आर्टिकल 14 टू 32 ओके आर्टिकल 14 टू 32 भितर एक्चुअल राइट्स उडा अछि तो सेटा टिके माइंड रे रखिबे आ कोठु एटा डिराइव हेछि ऑलरेडी हमें देखि सरछु सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस रो डिराइव कराइ ओके सो मेन ऑब्जेक्टिव कोन प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ठीक अछि सो बेसिकली स्टेट ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रखे कि आपण एई फैसिलिटीज और एई राइट्स गुडा इंडिविजुअल्स किबा सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को देबे सबु राइट्स गुडा सिटीजन्स पई किछि राइट्स अछि जोटा बोथ सिटीजन्स पई भी और नॉन सिटीजन्स पई तो सेटा मन रखिबे को राइटटा सिटीजन पई को राइटटा नॉन सिटीजन ओके ए जो प्रथम लाइन रे कहला इट इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ओके ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एटा कोन मैग्ना कार्टा वाज अ काइंड ऑफ ए चार्टर ऑफ राइट्स जोटा इंग्लिश रूलर्स तांको सिटीजन्स को प्रथम थर देइथिले ओके जो लेखा है कि आपणकर ए राइट्स रहइबो सिटीजन ओके सो दैट इज द थिंग सो फीचर्स को आसंतु so as I told you all of them are available to the citizens of India some of them are available to aliens also aliens माने जो देखो जी स्टार वार्स रे सही एलियन नो एलियन माने जो माने नॉन सिटीजन्स एलियन को भी आउ पुनी दी प्रकार विभक्त आपण कर परिबे गोटे हला फ्रेंडली एलियन गोटे हला एनिमी एलियन की ना गोटे पर्टिकुलर मुहूर्त रे जदि कोनोसी देश सहित आमर युद्ध चली ताले सेही देशर जो माने सब नागरिक अछंती सिटीजन्स अछंती से माने हेले एनिमी एलियन तेणु एही मुहूर्त रे आमर तो युद्ध चलनी का संगे इवन ए पाकिस्तानी और ए बांग्लादेशी इज नॉट एनिमी एलियन बुझी परले तो सो ए जो फंडामेंटल राइट्स परिका अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका रो जो फंडामेंटल राइट्स सेडा कोन एब्सोल्यूट एंड अनएब्रिज्ड द स्टेट कैनॉट एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स माने नहीं जाई परिबनी सेटा एठी किंतु आमर फंडामेंटल राइट्स रा क्वालिफाइड माने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सब फंडामेंटल राइट्स रे रहिबो ओके कि एई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट रो एटा हला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ठीक अछि आ आर्टिकल 19 जेतले हमें पढिबा सेटा मु कहबी आपन ते लिखि देबे नले बेयर एक्ट रे अंडरलाइन करिवे आर्टिकल 19 रो जो 6टा हमर राइट्स अछि ए 6टा राइट्स रो को एक्सेप्शंस तार देछि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सेटा माइंड रे रखियार अछि तेनु आपन को फंडामेंटल राइट ता एब्सोल्यूट नो ता ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पका ही परिबो ठीक अछि सेटा हला डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडिया यूनियन ओके कोन हमरो डिफरेंस ना तांकर फर्स्ट अमेंडमेंट रे कहला कि स्टेट शैल नॉट एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स माने तांको देश रे फंडामेंटल राइट्स तांको गवर्नमेंट नै परिबो ठीक अछि आम देश रे प्रथम चेंज कोन करायला ना आमर फंडामेंटल राइट्स गुडा आगुरु एब्सोल्यूट थिला माने जतले कॉन्स्टिट्यूशन आसिला फर्स्ट चेंज एया करायला कि नहीं सेटा एब्सोल्यूट हबनी क्वालिफाइड हबो ता माने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागिबो ओके तार ओडे बहुत बड़ इतिहास अछि सम अदर डे वी विल डिस्कस काहे कि नेहरू सेटा करले ओके सो एनीवे से नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट ता माने कोन ना एगुडा चेंज करि हबो दे कैन बी अमेंडेड नुआ जिंस पसई हबो कि ताकू आउरी अमेंड करि कि आपण आउ बेटर करि परिबे ओके से सब जिंस करि हबो राइट तापरे नेशनल इमरजेंसी बेले ताकू सस्पेंड करि हबो किछिटा जोडा बेसिक राइट्स अछि आर्टिकल 20 और 21 ओके आपणकर यू नो राइट टू लाइफ प्रिवेसी से सब बेसिक राइट छोड़ा बाकी घरिका बाकी फंडामेंटल राइट्स गुडा नेशनल इमरजेंसी जतो डिक्लेयर होची से गुडा सस्पेंड करा ही पारि ओके तापर आर्टिकल 19 रे जो आपन को राइट्स दिया आइची ओरिजिनली 7टा राइट दिया आइतिला किंतु आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी टा सेटा फंडामेंटल राइट्स उठाई गला तेनु एबे 6टा राइट अछि ओके तो से जो आर्टिकल 19 रो
जो राइट्स गुड़ा दिया है 6टी राइट से गुड़ा केतବେଳେ सस्पेंड हे परिबो when emergency is declared on ground of war or external aggression. ओके हमरो युद्ध हो गला पाकिस्तान संगे कि चाइना संगे सेही टाइम रे grounds of war or external aggression सेतिक बेले ही आर्टिकल 19 टा भी ओके सस्पेंड करी हबो ओके आउ केतବେଳେ रेस्ट्रिक्ट करी हबो जेतବେଳେ मार्शियल लॉ इज इन फोर्स माने मिलिटरी रूल हमर देश रे केबे हेनी सेमती पाकिस्तान रे सबळे होची जोडा मिलिटरी रूल आपण जदी ओके इट इज इन फोर्स देन फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्ट ओके एयोडा किछटा बेसिक जिंसो जोडा हमको देखिबार अछि फंडामेंटल राइट्स ऊपर बुझी परले इज इट क्लियर एतिकी पर्यंत बुझिले तापरे हमें आर्टिकल्स को जिबा कोन अछि खाली मन रखु कौन कौन जोटा इंपोर्टेंट से भलरे डिस्कस करी जोटा एमती खाली मन रखार अच्छे तो खाली मन ही रखता आउ थे क्लास सरला पीडीएफ टा ग्रुप पे से पढ़ीदे ठीक अच्छे नोट फोर्स बना दरकार नहीं पढ़ी की अंडरलाइन की हाइलाइट आप हिसाब से करदे बेसी आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़े यहाँ मेनली सिविल सर्विस ओके किंतु से कहीदे आठू इंपोर्टाट कौन इंपोर्टाट ही आमको पढ़ार अच्छे ओजेएस ओके जदि आम एमती भी करवा कि किछि न करी खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भल डिस्कस करदबा ताहले भी ओजेएस पे ठीक ही अछि बट सेटा तो मु करूची ता सहित आपनकर बेसिक जोड़ा नॉलेज जोड़ा दरकार ताकि आमे 60 मार्क रखि परिबा 100 रु 40 को बुली जानतु आम एम है 60 60 रखिया 60 आउट ऑफ 100 रखिया सेटा आराम रे हिजो ओके एनी डाउट एतरे किछि डाउट अछि नले आमे आर्टिकल स्टार्ट करिया नहीं so let us start with the articles so article 12 questions article 12 कौन कहूची एपटे देखंतु पार्ट 3 रो फर्स्ट आर्टिकल 12 पार्ट 4 रो फर्स्ट आर्टिकल 36 दीटा जाको स्टेट रो डेफिनेशन दोछ से फॉर द रेस्पेक्टिव पार्ट्स तेनु एठी स्टेट किए काहे ना ए जो राइट्स गुडा फंडामेंटल राइट्स गुडा आपन को मिलुची ओके दैट इज अगेंस्ट द स्टेट यू कैन क्लेम इट अगेंस्ट द स्टेट ओके तेनु स्टेट किए से डेफिनेशन टा दिया है आर्टिकल 12 रे कि जो भी आपणकर गवर्नमेंट रो बॉडीज हेले कि रिप्रेजेंटेटिव्स हेले इवन प्राइवेट सेक्टर जे कि गवर्नमेंट पई काम करछन से सब स्टेट रो डेफिनेशन रे जिबे सपोज गोटे रोड काम चल नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कामटा करूछ तो गवर्नमेंट एजेंसी सी ताको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दी ठीक अछि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम करूछ का पई गवर्नमेंट एजेंसी पई सी भी स्टेट रो डेफिनेशन रे जिवो ओके एटा बहुत थोड़ा पढ़ी ओडिशा जुडिशियल सर्विस रे भी आ अलगा जुडिशियल सर्विस रे भी कि आ भितरु को कोटा सेक्शन 12 रो आर्टिकल 12 रो डेफिनेशन रे जिवो ओके दे देची किए आ भितर जिवो स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट executive and legislative organs of state government all local authorities that is municipalities panchayats district boards investment trust all other authorities that is statutory or non statutory like LIC मन रखो डायरेक्टली पड़िबो ऑप्शन रे ONGC सेल एक्सेट्रा बुझ पर तो एडाला आर्टिकल 12 एबे आमो पॉइंट को आसीबो जेतु जुडिशियल सर्विस पे जुडिशियरी और द कोर्ट्स स्टेट रो डेफिनेशन रे आसीबो कि नहीं जो माने आगुरु करचंदी कॉन्स्टिट्यूशन रो क्लास हमर ऑप्शनल रो क्लास कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस रो आपण कहि परिए केना मु गोटिए क्लास केवल खाली आर ऊपर ही नेते ओके एमपीजीएन रे भी बहुत लंबा जोड़ा एडा लिखाई कैन एनीवन टेल मी जुडिशियरी और ए कोर्ट सेटा स्टेट रो डेफिनेशन अंडर रे जिवो कि नहीं अंडर आर्टिकल 12 I'll give you 1 minute. You tell me if you know. Otherwise, we will have a discussion on that. मु कहि देबी केतबळे कोर्टा स्टेट रो डेफिनेशन रे आसीबो केतबळे कोर्टा स्टेट रो डेफिनेशन रे आसीबो नाही एनीवन विथ एनी आइडिया भाबंतु गोटे मिनिट नले गूगल टिके सर्च करिकि कोहंतु आई विल गिव यू 1 मिनिट मु टिके जाय कि आई विल गेट सम वाटर फॉर मी ओके
हाँ देखिले एनीवन हु कैन टेल मी दीटा आंसर मन रखंतु जेतबेले कोर्ट जुडिशियल एडजुडिकेशन करछन एडजुडिकेट करछन ओके इट इज एक्टिंग एज ए कोर्ट it is giving its judgments and all it does not come under the definition of state okay article 12 under re asuni kintu when the court is acting as an administrative body hela ban rakhantu administrative body when the court is acting as an administrative body tahale se state ro definition re jauchi okay jetole se tara administrative kamo karuchi not judicial work not adjudication of cases not deciding not interpreting okay administrative activities करूछ तो कोडी इलेक्शन हबार थिला तो से तार कोन रूल सब से रूल पूरा बना होची कि एई टाइप रो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ताहले स्टेट रो डेफिनेशन रे जीवो बुझि परले कोर्ट किबा जुडिशियरी स्टेट रो डेफिनेशन रे जीवो कि नहीं आर्टिकल 12 रे yes if it is performing administrative duties no when it is performing judicial duties is it clear एटा लेखि भी दे परिबे एटा इंपोर्टेंट अछि एति देई दिसे ठीक अछि सेना टिके देखि देबे तापरे आर्टिकल 13 हमें पढिबा गोटे बहुत इंपोर्टेंट गोटे दिटा क्वेश्चन जंती आसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू विल स्टडी जदि कोनोसी गोटे लॉ इनकंसिस्टेंट होची फंडामेंटल राइट्स माने इट इज बेसिकली अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ताहले ओके जदि नुआ लॉटा अना हिची दैट इज नल एंड वॉइड एब इनिशियो और जदि गोटे पुराना लॉ अछि ओके ताहले जो पोर्शन ता तार फंडामेंटल राइट की वायलेट करूची सेटा एक्लिप्स हे जो जदि से टोटल लॉटा ही तार फंडामेंटल ता ही ओके अगेंस्ट अछि आपनकर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 रो ताहले टोटल लॉटा जीवो बुझि परले सो एटा मन रखिबे आर्टिकल 13 law inconsistent with fundamental rights हैला सो आर्टिकल 12 और 13 जस्ट खाली आपन को बुझिया पई इंपोर्टेंट किंतु से गुडा काना आगु को इंटरप्रिटेशन रे इंपोर्टेंट हो राइट एक्चुअल जो राइट्स गुडा अछि फंडामेंटल राइट हिसाब रे से गुडा असुची कोटो आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 32 तो से गुडा हमें बे देखिबा आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 32 तो फर्स्ट आसंतु राइट टू इक्वालिटी ओके राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु 18 भीतर सेटा अछि ओके पांचटा फंडामेंटल राइट से हिसाब रे अपन देखिबे ताकू ओके सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 एथरे दीटा जिंस अछि तार जदि अपन टाइटल देखिबे इट स्पीक्स ऑफ टू थिंग्स कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ए दीटा को अलग अलग कांसेप्ट हिसाब रे देखंदो इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके तो सेटा गोटे ब्रिटिश कांसेप्ट जोटा सकाळ क्लास रे कहउतली रूल ऑफ लॉ कांसेप्ट जोटा एविडाइसी जे ब्रिटिश जूरिस्ट थिले से प्रोपाउंड करथिले ओके तार डिटेल्स को मु जाउनी किंतु कथाटा हला एविडाइसी कोन करथिले ना से तीनटा पोस्टुलेट देथिले माने तीनटा जिंस कहिथिले कि एई तीनटा जिंस फुलफिल हेले जाय कि रूल ऑफ लॉ टा एस्टैब्लिश हबो आमे प्रथम दीटा जिंस मानिचु थर्ड टा मान ठीक अछि हमर जे फ्रेमवर्क्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव टेकन द फर्स्ट टू थिंग्स ओनली राइट सो कौन सेटा देखि देबा ठीक so and it is a British law equality before law and it is a negative concept ठीक अछि ता माने लॉ समस्त को सेम आपण प्राइम मिनिस्टर हेतांतु कि को भिखारी हेतांतु कि जे भी हेतांतु आपण जदी मर्डर करछथि इफ यू आर बीइंग ट्राइड फॉर मर्डर ताले सेम दफाटा आपण को ऊपर भी लागिवो से बेगर जी अछि ता ऊपर भी लागिवो प्राइम मिनिस्टर को ऊपर भी लागिवो ओके जेंति कि प्री रेवोल्यूशन फ्रांस रे थिला ओके तांकर सोसाइटी टा डिवाइड हे जाइतिला क्लास रे आपण को क्लास रो बिलोंग करछोनी से हिसाब रे जस्टिस फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए नोबल इफ यू आर ए किंग इफ यू आर ए प्रीस्ट ताले आपण जदी किछि क्राइम करछोनी मे बी आपण को टोटली किछि पनिशमेंट दियाबन बट इफ यू आर ए कॉमन पर्सन you have to pay maximum taxes and also you will be getting the punishment india re se jinso nei aku kon kohti class legislation depending on your class आपणकर को लॉ आपन ऊपर अप्लाई हबो इंडिया बैन्स क्लास लेजिस्लेशन हमरो क्लास लेजिस्लेशन रो कांसेप्ट नाही ओके आपण जे भी हेतांतु जदी किछि भूल करछन्ती पिनल लॉस विल बी सेम फॉर एवरीवन ठीक अछि तारो इम्यूनिटी किछिटा अछि जे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज रो अछन्ती सेटा में एक्सेप्शन रे देखिबा ओके तो एटा हला कोन ना
equality before law. British concept propounded by Dicey. Okay. तीनटा जिनसे से क्या वाला कौन? In the Indian system, the constitution is the source of individual rights. Okay. So basically, the absence of any special privilege in favor of any person. The equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by ordinary courts, and no person is above the law. यह हला तारा concept. Okay, तारा third concept कौन थिला? तारा माने हला basically primacy of individual rights over community rights. Okay, जोटा डाइसी जोटा देइथिले. किंतु ओवरऑल हमें जब देखिबा हमरो देश रे आस्ते आस्ते इंडिविजुअल राइट्स ऊपर फोकस आसी गलानी. किंतु हमें एंती कोइ परिबानी कि इंडिविजुअल राइट्स ओके सुपरसीड कर देबो कम्युनिटी राइट्स को. इनिशिएट जेतले हेइतिला कॉन्स्टिट्यूशन टा कम्युनिटी राइट्स ऊपर भी फोकस थिला. तो से गोटे जिंसटा हमें मानिलुनी जेतु वेस्ट जो यूके गरिका कि यूएस गरिका तांकर सेठी इंडिविजुअल फ्रीडम टा बहुत ही इंपोर्टेंट और से माने ताको बहुत गुरुत्व आगुरु दैछंदी. तेणु से थर्ड जिनसटा हमें मानिलुनी. ओके बट एई तीनटा जिंस दिस इज द क्रक्स ऑफ द ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ. तापर आसंतु इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एटा गोटे पॉजिटिव कांसेप्ट आउ अमेरिका रो नियाइछ. एठी कोन ना there will be equality based on situation or position of two people. If theta लोक equally situated, they have the same rights. I am a common citizen, you are a common citizen. मते जो राइट मिलिया कथा आपन की से राइट मिलिया कथा. किंतु आपन जेटा कैबिनेट मिनिस्टर मु गोटे कॉमन सिटीजन मु आ क्लेम कर परिबेनी कि आंकु जो राइट्स उडा मिलिछि मते भी सेही राइट्स मिलु. बेसिक राइट्स समस्त कर सेम एज सिटीजन ऑफ इंडिया. बट आपन को किछ वी आर नॉट similarly situated or similarly located. You are a cabinet minister, I am just a common man, so you will get more security. आपन को अलग भी सब जिंस रहिबो जोटा कि से फैसिलिटी मो पाखे रहिबोनी. आपन को पार्लियामेंटरी प्रिविलेज मिलिबो मते सेटा मिलिबोनी. ओके अब सेटा मु जन के कहि परिबिनी कि यू नो मोर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हे गला. ओके सो रिमेंबर दैट the equality of treatment under equal circumstances both in privilege conferred and liabilities imposed by laws. तो खाली एटा मु राइट्स कथा कहली प्रिविलेज कथा liabilities कथा भी सेम. ओके और सेकंड है the similar application of same laws for to all persons and the like should be treated alike without any discrimination. Exceptions कौन? तो जो माने let's say United Nations रो officials हे गले कि डिप्लोमेटिक मिशंस रो ऑफिशियल्स हे गले 5-6 वर्ष आगु अपन मानथिबो गोटे केस हेतिला सऊदी अरेबिया रो एम्बेसी रो गोटे लोक सेटा मर्डर कर देथिला. ओके वाइस एम्बेसडर किमति कोन गोटे थिले इंडियन मेड को मार देथिले. तो हमें अरेस्ट करी कि ताको मर्डर चार्ज रे ट्राई कर परिबानी. ताको देश को पठाई गला. ताको देश रे ताको पर मर्डर चार्ज चलला. कुछ पहले ठीक सेमती जो माने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रे अछन नि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको ऊपर क्रिमिनल केस करी होबनी सिविल केस करी होबो आगुरु नोटिस देकी. ओके तेनु बहुत गुडे एमती एक्सेप्शंस अछि इक्वालिटी रो. ठीक अछि. तो सो दे आर एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी कोन पय ना ए माने सब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज. ओके द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट. प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, फॉरेन डिप्लोमेट्स हु एंजॉय इम्यूनिटीज, protection and special privileges. Okay, आंको जो special privilege दिया है. So that is basically your article 14. दीटा याको concept. Okay, important concept सेटा that is equality before law and equal protection of law. एटा बुझी परले एटा simple हमरो OJS से simple question আছে कोन equality before law has been derived from which jurisprudence? British, American से लिखि दियो ancient Indian jurisprudence whatever. ठीक अछि. So equality before law British jurisprudence to equal protection of law American jurisprudence to. ठीक अछि. तो कुछ पहले any doubts you go through that article 14 टा देखंदु. आपण जदि बैर एक्ट फॉलो करतन सेथरु भी पढ परिबे किछ नै. ओके जो जगह रे डाउट होबो एठी जदि पचारि पारुनांती ताहले मते व्हाट्सएप करी की पचार दे परिबे. किंतु डाउट सुरा माइंड रे रखिबे. व्हाट्सएप रे जदि मते डाउट टा पचारिबे मु वॉइस नोट रे आपन को पठे देबे. ठीक अछि ना. टेक्स्टिंग करबा बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन द पड़िबो. सो आई विल सेंड यू अ वॉइस नोट. ठीक अछि. तुरंत अपन मते एबे डाउट टा पचोरजंती मु टिके because after the class I will start seeing that. ठीक अछि.
तेणु टिके ऑड आवर्स रे पठे दे पारे सेटा सो प्लीज डोंट माइंड जेते बेले मते टाइम मिलियो मु सेटा ओके डाउट्स आपनकर सेटा क्लियर कर देबे एनी डाउट इन आर्टिकल 14 नहीं आर्टिकल 14 टा बहुत इंपोर्टेंट तेणु तार क्वेश्चन करबा आगे ओके आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 रो क्वेश्चन उडा मु छाड़ दोची 10 10 20 टा क्वेश्चन अपन टाइम देखि ताको देखिबे ओके आर्टिकल 14 इंपोर्टेंट अछि वी विल go for questions of article 14 all these questions are already uploaded ଆପଣଙ୍କ app ରେ uploaded ହେଇକି ଅଛି asante first question which of the following best captures the concept of equality before law under article 14 it mandates absolute equality in all circumstances without any classification it implies absence of any special privilege and equal subjection of all persons to ordinary law माने क्लास लेजिस्लेशन किछि रहबन ओके सो दिस इज करेक्ट दैट इज बी इट परमिट्स आर्बिट्ररी एक्शन इफ अप्लाइड यूनिफॉर्मली इट अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया सो बी विल बी द आंसर इक्वालिटी बिफोर लॉ अप्लाइड टू एवरीवन नॉट ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया ओके इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स नॉट ओनली सिटीजन्स I'll show you the bare act आपण जते बेले पढुचंती ओके तो आपण जानिबे केमती कोटा ओनली सिटीजन्स को पई कोटा बोथ सिटीजन्स और एलियंस को पई देखंतु एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो बेयर एक्ट ओके सेथरे गोटे जिंस देखिबे से कोन लेखुची पर्सन्स लेखुची कि सिटीजन्स लेखुची जदि सिटीजन्स लेखुची ताले केवल सिटीजन्स पई यदि पर्सन्स लेखुची ताले समस्त को पई देमति आर्टिकल 27 नियंतु फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एटी कोन लेखिला नो पर्सन पर्सन माने समस्त ओके आरो बहुत मिसयूज होउची भी बाहर विदेश लोक आसी की एठी हम देश रे रही की से तांगा रिलीजियस प्रोपागेशन आउ सब एफर्ट सेफर्ट काम करचंदी ओके बट एनीवे से जब यू एपटे हमें जदि देखिबा आर्टिकल 14 हमें देखथलु सो सेठी अपन देखिबे आर्टिकल 14 रे कोन कोइची सेही पर्सन्स कोइची ता माने बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन ठीक अछि राइट किंतु तापर नेक्स्ट जो 15 आर्टिकल 15 टा देखिबे द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen so 15 ta citizen pai ठीक है no citizen shall तो only for citizens article 16 भी से public employment रे equal opportunity ठीक है jau आमे कोन हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आन की कहबो कि तुम आसी गवर्नमेंट सर्विस करो बहुत जण करि चंदी असम रे आउ वेस्ट बंगाल रे ताको आस्ते आस्ते बाहर करिवार अछि ओके एनीवे एटी भी देखंतु आर्टिकल 16 there shall be equality of opportunity for all citizens ठीक है citizens कहला से right so these things you have to keep in mind बुझि पारले तो बेयर एक्ट पढिबे देखि देबे एटा एथरु जणा पडि जिवो ए पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट टा सिटीजन पई ना समस्त को पई now come to the next question which of the following correctly explains equal protections of law it requires identical law for all persons no okay similarly situated लोगों को पे दरकार हबो identical law it permits reasonable classification एई टर्म टा बहुत इंपोर्टेंट prelims में एते नो मेंस में बेसी जो माने नेबे constitution as your optional it permits reasonable classification based on intelligible differentia and rational nexus तीनिटा जाक लेखि दियंतु जदि जानि नांती माने जेतले परे मु पढेबी सेटा एक्सप्लेन करबी रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया रैशनल नेक्सस ओके इट प्रोहिबिट्स एनी differentiation between persons भूल it applies only to criminal laws okay that's also wrong so B will be the correct answer explanation पढिबे ताको भल रे पढिबे केस लो आसिला in ER Rayappa versus state of Tamil Nadu Article 14 was interpreted to mean what? Equality is antithetic to arbitrariness. Okay, directly जोटा आपनकर जजमेंट रे कुआइतला
Okay, equality applies only to legislative action, that is wrong. Equality excludes administrative review, that is also wrong. Equality is confined to classification doctrine. So A will be the correct answer. Equality is antithetic to arbitrariness. Arbitrariness माने कौन? भाई सेम भूल गोटे लोक करची, दीटा लोक सेम भूल करछन, जणको मु गोटे पनिशमेंट दोची आ गोटे आ गोटे पनिशमेंट दोची, सेम सर्कमस्टेंसेस सब दिन तो सेम अछि। काहे ना गोटे लोक मते भल लागिला कि से गोटे पर्टिकुलर धर्मर, आ गोटे लोक मते भल लागनी कि से गोटे आ गोटे पर्टिकुलर धर्मर, सो दोस थिंग्स कैन नॉट बी डन, सेटा हला आर्बिट्ररी एक्शन। क्वेश्चन 4 को आसंतु, व्हिच टेस्ट मस्ट ए क्लासिफिकेशन सैटिस्फाई अंडर आर्टिकल 14? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, strict scrutiny test, basic structure test, intelligible differential and rational nexus test. हैला बीटा मतलब के जोड़ा क्वालिटी भी लिखे हैं। हाँ कौन? हाँ सर ये जो स्क्रीन टा विजिबल होनी ठीक से स्क्रीन टा विजिबल होनी सेटा आपण गोटे काम करंतु ताकू जूम कर दियंतु, ठीक है जी। स्पॉटलाइट मोड को नहीं आसंतु, ताकू जूम कर दियंतु, ताले आपण को देखा जिवो ठीक रे। स्पॉटलाइट मोड रे आनले क्लियरली सेटा देखा जिवो आपण। देखले? So D is the correct answer. Now question 5 के आसंतु, in Menaka Gandhi versus Union of India, Article 14 was interpreted to operate independently of Article 21, be linked with Articles 19 and 21, forming a golden triangle, applies only to executive actions, be confined to discrimination cases. B is the correct answer and very, very important. Golden triangle of fundamental rights. लिखी दियो तो short notes लिखी में. Golden triangle of fundamental rights 14, 19, 21. Golden triangle of fundamental rights 14, 19, 21. हैला एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा माइंड रे रखिबे। एक्सप्लेनेशन सेतने कहूची थर थरे पढिबे। क्वेश्चन 6 को आसंतु, a law classifies persons based on arbitrary criteria without rational relation to object. What is the legal position? Law is valid if uniformly applied. Okay, arbitrary criteria use kole, rational nexus upon use kole ni. Law is void that it violates Article 14. This is correct. काहेकि ना जोटा कि nexus, rational nexus रहिबा कथा, rational nexus रहिलानी. Law is valid if enacted by parliament, नुहा. Law is valid if it's temporary, सेटा भी नुहा. जदि arbitrary criteria नहीं चंदी, rational criteria नहीं नांती, ताले law will be void. Okay. Question 7 को आसंतु, in Shaira Bano versus Union of India, which principle of Article 14 was applied? Doctrine of eclipse, manifest arbitrariness, doctrine of severability, doctrine of waiver. Okay, जोड़ा triple तलाक केस हेतिला, so manifest arbitrariness. Okay, very important, एटा mind रे रखिबे. Manifest arbitrariness, in which triple talaq was declared unconstitutional. Okay. Tapare question 8 को आसंतु, which of the following is not a valid classification under Article 14? Not. बहुत टाइम में कौन हुए से क्वेश्चन देती हो, which of the following statement is not correct? आमे not आमे माने excitement रे not टा भूली जिबा. आमे पढिबा कोन ना which of the statement is correct, आमे जोटा प्रथमे करेक्ट आसला आंसर दे देलु से. जो टेस्ट सीरीज देबे किंबा जहां भी आपण प्रैक्टिस करछंती, एमती बही पढला बळे ताको प्रैक्टिस करिवेन. गोटे ओएमआर शीट डाउनलोड करिवे कि मार्केट रो किन देबे. एबे तो बिग बास्केट करी करे भी मिलुची ओएमआर शीट, हैला 50 टा नहीं आसीबे कि गोटे जाई कि गोटे जेरॉक्स दुकान रु ताको 100 टा जेरॉक्स कर देबे. जहां भी टेस्ट देबे सेटा ओएमआर शीट रे मार्क करी कि देबे. काहे कि ना एमती रेडियो बटन क्लिक कर देबाटा भारी सहज. ओके, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड रे हिजिबो, किंतु एक्चुअल बबलिंग जते बेले करा हबो ओएमआर शीट रे अधिक समय नबो. बहुत पिला कोन करंदी, एठी एक्चुअली एते जणा पड़ेनी काहे कि ना हो तो 40 मार्क की रखिबार अछि, किंतु जोटी कट ऑफ ओके डायनामिक थाए सिविल सर्विस वरी काय गला
सेठी ए गोटे गोटे सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट ओके सो ऑलवेज रिमेंबर जेहेतु आपनकर पेन एंड पेपर परीक्षा आपण प्रैक्टिस ता सबले ओएमआर रे करिवे ओके 11 तारिख रु टेस्ट सीरीज स्टार्ट हे जिवो 11 तारिख रु जो टेस्ट गुडा दिया हबो ताको सेमते पढ़ी देबे पढ़ी दियंतु ठीक अछि किछ असुविधा नै किंतु जो टेस्ट देबे ऐप रे देबे तो भलो कथा ऐप रे देले रैंक आस जिवो किंतु ताको फुनी आउ थरे ओके पेपर पेन रे देबे ठीक अछि क्वेश्चन 8 को आसंतु which of the following is not a valid classification under article 14 classification based on geographical location with rational nexus classification based on intelligible differentia classification based on arbitrary or artificial distinctions classification based on economic criteria with purpose so C of answer arbitrary or artificial distinction okay not कहिच not a valid classification तेणु आपण जदि arbitrary rational किछि rational नथिबो सेतरे rational nexus आसीबोनी ताले सेटा null and void हे so C will be the answer not पचारसिला question 9 को आसंतु a state grants benefits only to a group without rational basis जो group एताउ religion caste region जाबियो which principle is violated reasonable classification equal protection of law freedom of speech separation of powers okay से तार क्लासिफाई केमिति करिछि सेटा से कोन किछि किंतु से गोटिए पर्टिकुलर ग्रुप को दोछि विदाउट एनी रैशनल बेसिस सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी लागिबो एटा भी ठीक अछि ओके बट मोर करेक्ट विल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक अछि काहे कि आपण जे डिस्क्रिमिनेट करछंती ताले सेटा देखिबार अछि कि से माने दे आर नॉट इक्वली सिचुएटेड बट एटी गोटिए ग्रुप को दिया होछि किंतु रैशनल बेसिस किछि नै ओके सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक एटा भी कंफ्यूजिंग हे पारे ए एंड बी मुझे कहली सबले देखिबे जेतले कंफ्यूजन होबो दीटा की बेसी ऑप्शंस रे सबुटू क्लोजेस्ट ऑप्शन कोटा कि स्ट्रांगेस्ट ऑप्शन कोटा सेटा को आंसर मार्क करिवे ओके क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन को आसंतो a statute provides special privileges to a class of persons but such privilege is reasonably related to objective of welfare what is the correct position it is valid as reasonable classification is permitted it is invalid as privileges are prohibited it is invalid unless applied equally to all it is valid only if temporary so A will be the correct answer okay but such privilege is reasonably related to the objective of welfare सेटा क्लियरली कहिछि माने रीजनेबल क्लासिफिकेशन करिसेंती रैशनल नेक्सस अछि ताहले दैट इज परमिटेड सेटा वैलिड हबो ओके नाउ गो थ्रू दिस ओके आपनकर ऐप रे देखि दियंतु एटा the 10 questions if you have any doubts okay we'll take a break for 2 minutes about article 14 gala next we will go to article 15 ei section part 3 टा मु टिके रश करबिनी नले बाकी हमें तो बहुत दिन तो स्किप करबा ठीक अछि ऑल्दो आपनको ई 465 460 एक्स सेक्शंस रो सबुरो 10 10 टा क्वेश्चन मिलिबो किंतु सेगुडा सबुगुडा इंपोर्टेंट नो सेटा थाउ आपण पाखरे आपण ताकू यू नो रिवाइज करिवे जो माने इंटीग्रेटेड बैच स्टूडेंट्स स्टिल सक्सेस रो आपनकर ऐप एक्सेस अछि 30 वर्ष पई जो माने एपीपी बैच स्टूडेंट्स अछंती आपनकर 2 वर्ष पई अछि जो माने प्रीलिम्स बैच स्टूडेंट अछंती आपन वर्ष पई अछि तो सफिशिएंट टाइम अछि आपनकर जेतोले अदर फ्री टाइम थिबा कांसेप्ट क्लियर करिया पे आपण ताकू देखि परिबे किंतु एबे जो गुडा एग्जाम रे पढिबार बेसी स्कोप अछि बेसी चांसेस अछि मु सेही गुडा डिस्कस करू ओके so just take 2 minutes go through it then we will go to the theory of article 15
Done. Now let us go to Article 15. Prohibition of discrimination on certain grounds. State shall not discriminate against any citizen. तो এটা खाली citizens को पाई. On grounds only of, ये जो only of ना most important keyword है. हैला केवल religion, race, caste, sex or place of birth पाई discrimination हबनी. Okay, किंतु आ छोड़ा अलगा जिनस ऊपर ही पारे. Only on this ही पारी बनी. Merit ऊपर ही पारी वो अलगा जिनस ऊपर ही पारी. So the only of the both important data mind रखिबे. What only connotes that discrimination on other grounds is not prohibited. So discrimination on other grounds apart from these 5 grounds is permissible. Religion, race, caste, sex, place of birth. ताको छाड़ी देले अलगा ground रे discrimination prohibited नुह. No citizen shall be prohibited from using general public use properties maintained partly or fully by state funds. ता माने कोन मतलब public well अछि. You know आगुरु जेतले एबे भी किछि जगह रे अछि सेमती interior villages करी करे जो caste ये रे कि particular caste रो लोक माने से village pond को आसी परिबेन से गुडा सब बैंड एथरे. ओके कोनोसी सिटीजन को आपण प्रोहिबिट कर परिबेनी जोडा कि जनरल यूज रे जो प्रॉपर्टी गुडा मेंटेन हेची स्टेट फंड रे होली हो कि पार्टली हो. ओके this provision prohibits discrimination both by state and private individuals. Public road गोटे अछि सेठी के जळा लेट्स से विलेज रो जमींदार की दादा से माने कोन करछन बंद कर दोचंदी रोड को कि अमुक जाति रो लोक से रोड रे जाई परिबेन. ओके so that is violation of article 15, right? Exceptions kono state is permitted to make any special provision for women and children and socially and educationally backward citizens in educational institutes, economic weaker sections and scheduled caste and scheduled tribe. तांको पई करी हबो एई सब कैटेगरीज रो लोकन को पई करी हबो स्पेशल अरेंजमेंट करी हबो सेटा वायलेशन हबो नाही. Okay, it will not be a violation. So article 15 टा माइंड रे रखिबे. Okay, now come to article 16 जोटा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जो सरकारी चाकरी अछि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके तो सेही तरे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैला ता माने कोन ना परीक्षा समस्त देई परियो. काको मना करा ही परिबन कि ये एई पर्टिकुलर जाति रो ये एई पर्टिकुलर धर्म रो ये एई अमुक जगह रु आछि एई रीजन रु गां रु आछि एटु आछि ये देई परिबन परीक्षा. तो एईटा ता कंडीशन टा भल रे बुझंतु. अपॉर्चुनिटी टा इक्वल परीक्षा आपण देबे तापरे आपण पाइबे न पाइबे ता पई अलगा रिजर्वेशन रूल्स हमर अछि. ओके सो it provides for equality of opportunity for all citizens. So this is also for only for citizens of India. In matters of employment or appointment to any office under state, no discrimination for employment under the state on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. Okay, only. Exceptions from Parliament can practice residence as condition for certain employment or appointment in state or union territory or local authority. कहीं ना सही पोजीशंस पई से लोकल कल्चर ता जानथिबा दरकार. आंध्र प्रदेश रे एमती आगुरो अपॉइंटमेंट सहितिला एबे आ सेमती नाही. ठीक अछि तो सेटा कोन मेरिट किंबा केते आपण एंट्रेंस हिसाब रे कर परिबे. ओजेएस रे भी देखंतु ओजेएस रे कोन मना करा होची कि नाही आपण जदी ओडिसा रा डोमिसाइल नथिबे ताले देई परिबे सेमती तो कोनी. ओके किंतु आपण ओडिसा रे काम करिवे ना तेनु आपको ओडियाटा लिखिया जानिया दरकार पढिया जानिया दरकार तो सेटा मेंस परीक्षा रे रखि देले. ठीक अछि एबे गोटे पिला जे महाराष्ट्र रु सेठी बॉर्न सेठी ब्रॉट अप से मराठी सिखिचंती आ ओडिया भी सिखिले आ आसी कि ओडिसा जुडिशियल सर्विस परीक्षा देले आ मेरिट रे रैंक रखि कि पाई परिबे जॉब किछ असुविधा नै. ठीक अछि तो ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और ओके रेसिडेंस. उपरटारे 5टा थिला 15 रे 16 रे केतेटा अछि देखंतु 1 रिलीजन 2 3 4 5 6 7 7टा दीटा एक्स्ट्रा कोन गोटे हला रेसिडेंस आ गोटे हला डिसेंट.
ठीक अछि ए दिटा एक्स्ट्रा आपन रही छै सो एक्सेप्शंस कोन ना पार्लियामेंट सेमती लॉज बनै परिबे जोठी की गोटे पर्टिकुलर एरिया रो लोकन को प्रेफरेंस दिया हबो काहे की आपन पचरे काहे की एमती ना से जिनसटा जानिया पे आपन को कल्चर ता जानिया दरकार तार गोटे एग्जांपल आंध्र प्रदेश हमें पाउछु आंध्र प्रदेश में थिला बट एबे नाही से जिनसटा ओके कोन पे नाही ना से माने तापर सुप्रीम कोर्ट कोन कहला कि भाई तुम ट्रेनिंग दे दियो ना तो कोजो ना से कल्चर ता से जाननी ठीक अछि जे मेरिट रे पाउची पाउ तापर ताको ट्रेनिंग दे दियो okay second reservation of appointments or posts in favor of any backward class that is not adequately represented seta bhi exception re rahila tapare 103rd amendment act of important amendments alga class re mu discuss kari ta upare question pade theek achi amendment acts bhi aur amendment bills bhi okay in order to give effect to this provision central government issued an order in 2019 जोटा EWS reservation हमें कहूछु 10% of EWS reservation ओके तो गला एटा आर्टिकल 16 मु आर क्वेश्चन को जाउनी क्वेश्चन आपन पाके अवेलेबल आपन ताको देखिबे देन आर्टिकल 17 को आसंदु abolition of untouchability okay so article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form ठीक है untouchability कोन definition of untouchability टा ओके कॉन्स्टिट्यूशन रे भी आपनकर डिफाइन हेनी ओके किंबा कोनसी एक्ट रे भी ताको डिफाइन कराइनी एनी टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी ओके आउ इट इज अवेलेबल ओके अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स आल्सो ठीक है तो जे सब एटा कोन एक्चुअली अपन देखिबे सब ओडिसा रे तो एते नो ओडिसा रे बहुत जगह रे थिला ओके बट मेनली इन नॉर्थ इंडिया हरियाणा उत्तर प्रदेश पार्ट्स ऑफ पंजाब जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होतला सेठी से माने कोन जो बंधुआ मजदूर कोटले तार सब बहुत टाइप रो थिला ओके फॉर एग्जांपल दिस पीपल हु आर केप्ट एज बॉन्डेड लेबर एंड नॉट पेड ओके एमती बहुत गुडे आपण जिंस पाई परिबे राइट तापरे अनटचेबिलिटी इन फॉर्म ऑफ कास्ट क्रीड ठीक अछि ये ए जाति रो तो ए मंदिर आसीबेनी कि या करिवेनी से करिवेनी ठीक अछि किंबा सैनिटेशन वर्कर्स करो जो नाइट सॉइल की ड्राई लैट्रिन्स ओके से गुडा बाई पर्टिकुलर लोकों को कुआउतला सो सबु अनटचेबिलिटी रो फॉर्म एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 17 ठीक अछि सो से जिंसटा अपन देखिए इफ यू सी हियर बिकॉज बेसिक राइट्स आपण कोन केवल आपण सिटीजन को देबे समस्त को देबे ओके तेणु आपण निजे भी बुझी परिबे जदि बेसिक राइट टा सेटा पर्सन्स को दिया होछ ठीक है तो समस्त को दिया होछ नॉट ओनली फॉर द सिटीजन ठीक है सो सेटा हला आपनकर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice in any form is forbidden any form right enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law तेनु से हिसाब रे बहुत गुडा लेजिस्लेशन पर करा हला ओके सो एटा हला आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 को असंतु एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कोन हु टाइटल्स विषय रे हम कहू ओके दीज आर हेरिडेटरी टाइटल्स ओके ब्रिटिश माने कोन करथिले आगुरु हेरिडेटरी टाइटल्स दोथले रॉय चौधरी ठीक अछि किंबा बहुत गुडे एमती टाइटल सब थिबो तो जे जमींदार तांको परे तांको पिला भी से टाइटल्स यूज कर परिबे दीज आर कॉल्ड हेरिडेटरी टाइटल्स से टाइटल संगे रे बहुत गुडे प्रिविलेज आसे से जो जहा आपन को लैंड अछि जति कि रेवेन्यू फिक्स्ड हेतिबो ब्रिटिश को दे देबे बाकी जत्ते रेवेन्यू आपन कलेक्ट करिवे आपन को ठीक अछि तो से टाइप रो इट डज नॉट इंक्लूड मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन आपन आर्मी रे मेजर अछंती तो आपन लेखुछंती मेजर सो एंड सो सेटा भी गोटे टाइटल बट इट इज अ मिलिट्री टाइटल इट्स योर रैंक यू हैव अर्नड इट सेमती जने के पीएचडी कला जने के डॉक्टर अछंती जने के इंजीनियर अछंती से तंकर ना आगे लगुछन डॉक्टर इंजीनियर व्हाटएवर ओके मेरिट रे सेटा से पाइके एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होइका एता इंक्लूडेड नाही एथरे गोटे इंपोर्टेंट केस आसिला सुप्रीम कोर्ट अगुरु रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड्स ओके मु एमती लेख परबी कि पद्मश्री मोनाटा या
ओके पद्म भूषण मो नाटा आया सो सुप्रीम कोर्ट कहले एगुडा ऑर्नामेंटेशन नुह आकु एमती यूज करिया कथा नुह जे आकु यूज करछि सेमती से रिटर्न करि दो एटा गोटे ऑनर आपन को दिया आइतिला बट इट वाज नॉट अ टाइटल तो टाइटल माने हेरिडेटरी टाइटल्स अच्छा मोर इच्छा अछि हेरिडेटरी टाइटल यूज करिया पे ब्रिटिश माने मते देइतिले टाइटल रॉय चौधरी तो मु मोर रॉय चौधरी लिखिबी ओके तार माने किछि नै इट विल नॉट गिव मी एनी प्रिविलेज आई कैन राइट मु कोन नाम मोर रखी सेटा तो मो ऊपर डिपेंड करछि ना बुझि परले तो सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of national awards that means भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण ओके पद्मश्री सेगुड़ा सब ठीक अछि बट ताकू अपन टाइटल भले यदि यूज करछथि ताले बेटर ताको फेरे देबे तो सुप्रीम कोर्ट हैड टू से दैट डोंट यूज इट एज टाइटल्स इट इज अ अवार्ड इट्स अ ऑनर गिवन टू यू ओके बट अनफॉर्चुनेटली प्राय समस्त यूज करछन से ओके तो एटा गला आपनकर आर्टिकल 18 so article 14 to 18 okay that is your right to equality ठीक है now article 19 one of the most important articles तो ता हिस्ट्री टा ये कहबा article 19 to 22 हैला right to freedom okay article 19 टा आज कंप्लीट करबा then article 20 रू I will start tomorrow kind article 19 टा हमर तार क्वेश्चंस करिया पे पडियो एटा बहुत इंपोर्टेंट ओरिजिनली जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेथरे आर्टिकल 19 रे 7 फ्रीडम्स थिला 7टा फ्रीडम थिला ओके किंतु परे कोन हैला ना ड्यू टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यू नो एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस आगु जेतले हमर लैंड रिफॉर्म्स करिका हैला जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस सेतबेले देखा गला कि गाँ गाँ रो लैंड गोटे दीटा फैमिली पाखे रोच माने से माने एते पावरफुल हे जेते जमींदार तेनु लैंड रिफॉर्म्स आसिला लैंड रिफॉर्म्स रो बहुत प्रकार रो तार कहि परिबे कंपोनेंट्स थिला गोटे कंपोनेंट थिला सीलिंग लॉज सीलिंग माने कोन जंते आपण रूफ रो सीलिंग कहउछन माने ऊपर लिमिट ता ठीक अछि तो आपण कोन सीलिंग ऊपर को जाय परिबे कि ताको फटे कि तो ऊपर लिमिट ता ता माने कोन ना राज्य को नै कि केते केते बड़ राज्य अछि केते केते छोट राज्य अछि से राज्य रे आपणकर मैक्सिमम गोटे लोक आ गोटे फैमिली केते जमी रखि परिबे ओके तो जना पड़ला कि भाई तो गोटे गोटे जमीदार अछथि ताकर 5 गुण 10 गुण 15 गुण जमी अछि केते कि मैक्सिमम सीलिंग तो कोन हबो ताकटू अना हबो सेटा स्टेट रखिबो जो मानको जमी नाही ताको रिडिस्ट्रीब्यूट करियो कि जहा पब्लिक पर्पस पे यूज करियो एई जिंसडा तले हैला बहुत जन जमीदार काने सेतबेले राइट टू प्रॉपर्टी टा फंडामेंटल राइट थिला ओके अंडर आर्टिकल 31 and also under article 19 तो से माने सुप्रीम कोर्ट पळेले जेतु फंडामेंटल राइट्स है सुप्रीम कोर्ट भी केते केसेस रे तो स्टे फेल हो गेला तेनु गवर्नमेंट को आगु को जो लोकों को पई जो पब्लिक वेलफेयर रो काम करिवार थिला एई जमी को नै कि से कर परबन तेनु से डिसाइड करले नै हमको राइट टू प्रॉपर्टी टा फंडामेंटल राइट रू हटै कि ताको गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट करिया पे पड़िबो सो दैट इज व्हाट द पार्लियामेंट डिड तो 7टा रु गोटे खसी गला एबे 6टा राइट्स आपनकर अछि right to freedom of speech and expression, right to assemble peaceably without arms, right to form association or union or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of territory of India, right to practice any profession. Okay, so your right to property ta 44th amendment रे कटि जे right ए जो 6टा राइट्स होइला टिके टिके डिस्कस करिबा प्लस ए 6टा राइट रो ईच राइट रो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस माने रखिबे सो कम टू योर बेयर एक्ट आल्सो दीटा जक रेफर करिबा बेयर एक्ट रे वी विल गो टू 19 ओके एठी तारा देछि फॉर एग्जांपल क्लॉज 1 कथा कहूची से ओके व्हिच इज freedom of speech and expression हला freedom of speech and expression कोन कोन ताले तार reasonable restriction रहिबो reasonable restrictions on exercise of right conferred by the said sub clause in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court,
defamation or incitement to an offense. टिके कष्ट हबो किंतु एगुडा मन रखियार अछि ये ओजेएस रे एमती क्वेश्चन पचारि न पारिए बट पड़ी गले तेणु सबु 6टा राइट रो 6टा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मने रखिबे सो स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोन आपण जहा इच्छा कहि परिबे ओके जहा इच्छा लिखि परिबे कैरिकेचर्स बनै परिबे ड्राइंग बनै परिबे बट it should not okay intrude into the fundamental rights of another person ठीक अछि तो तार तो ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रो लिमिट ता कोठी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अछि ना तो देखिले आपण को जगह रे ता माने आपण कोन लिखिबे कि मर्डर करो देश को ये कर दियो सेगुडा सब कहि होबनी कि लिखि होबनी ओके बट तार भी अगेन lot of other things are there which you need to know so freedom of speech and expression any type of speech and any type of or all type of expression but subject to the okay reasonable restrictions which we saw now tapare second to assemble peaceably and without arms तो आपण peaceably assemble कर परिबे protest कर परिबे बिना arms को नहीं की ओके तो सेटा हला clause b तो आर कोन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखंतु now nothing in subclause b of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of sovereignty and integrity of India or public order reasonable restrictions on exercise of the rights conferred by said subclause okay sovereignty or integrity of India public order एगुडा से देला तापर आसिला नंबर 3 थर्ड आपनको राइट छोटा राइट भीतर टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जेतु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ताको मिलला तो 96th अमेंडमेंट रे सेटा इंक्लूड कराई 2011 रा ओके टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस आपण फॉर्म करि परिबे ओटा क्लब फॉर्म कर देले एसोसिएशन फॉर्म करले यूनियन फॉर्म करले दैट इज अ फंडामेंटल राइट बट you cannot say that has to be registered by the state आपण registration पे अप्लाई करिवे स्टेट मना कर दे पारे नै नै आपनकर एई प्रॉब्लम पे रजिस्टर हे परिबन सो रिमेंबर formation of association or union is a fundamental right but registration of association or union is not a fundamental right okay so question pa asi jo under article 19 okay clause c clause 1 okay sub clause c registration of association or union is a fundamental right registration दिया है formation no so that is wrong registration is not okay fundamental right सेटा नो ताले d को आसंदु so c रो you can see the reasonable restrictions कौन रहला interest of sovereignty and integrity of India or public order or morality okay एटा रहला तापरे नेक्स्ट फोर्थ को आसंतु टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जोठी इच्छा पड़ो इंडिया टेरिटरी भीतर आपनकर इंटरनल मूवमेंट रो फ्रीडम अछि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर कोन ना जो जो जगह रे गवर्नमेंट अलाउ करनी आपनकर मु न्यूक्लियर आपनकर स्टेशन भीतर उजिबी ओके तो सेटा अलाउ करिवे ना किंबा नॉर्थ ईस्ट रो किछटा जगह अछि आ केटा जगह रे किछटा जगह अछि बिकॉज़ द कल्चर इज वेरी सेंसिटिव देयर ओके तो सेठी हमर गोटे परमिशन यूज हुए जंती नॉर्थ ईस्ट रे यूज हुए आईएलपी इनर लाइन परमिट ओके इनर लाइन परमिट करी आपण जटी जिबे तो आपण गोटे इनर लाइन परमिट आपण काई आछछंती मु 10 दिन टूरिज्म पे आछि संगे संग मिल जो आपण कहबे ना मु 3 मास रहिबी तो 3 मास आपण को दिया हबो 10 दिन रहिबे चिटे कारण सेठी बेसी टाइम रहिले कोन बाहर लोक सेमती भी बांग्लादेशी रोहिंग्या पसिकी बहुत प्रॉब्लम सेठी करूचंदी डेमोग्राफी चेंज करूचंदी ओके नॉर्थ ईस्ट टिके कम काहे ना सेठिकार ट्राइब्स माने ओके से माने व्यवस्था कर दियन यदि बाहर आसी सेठी आउटसाइड काम कलो सेटा से माने अलग व्यवस्था थाए सेठी तो बेसी हेइनी किंतु तथापि आस्ते आस्ते बढ़ुची सेटा राइट तो से सब जगह बुझिया पे आपण को इनर लाइन परमिट दरकार हबो सो एटा हला इंटरनल मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओके आर्टिकल 19 अंडर रे फंडामेंटल राइट टू मूव अब्रॉड आपण पाए पैसा अछि पासपोर्ट अछि वीजा अछि जेंति कि से
मेनका गांधी केस रे हितला तो सेटा आर्टिकल 21 अंडर रे जीवो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक्सटर्नल मूवमेंट एटा इंटरनल मूवमेंट देश भितर जोठी भी आपण जाय परिबे ता पय वीजा वीजा दरकार ओके सपोज यू वांट टू गो टू अंडमान एंड निकोबार आपन कुछ परमिट दरकार वीजा दरकार को इंडिया सारा जाय परिबे कोठी परमिट वीजा किछ दरकार नहीं ठीक अछि बट यू सी इन चाइना मोरले यूएन रे काम करथिली मु मकाउ रे पोस्टेड थिली ओके मकाउ इज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना मकाउ रु जस्ट तार मेनलैंड चाइना को जीवा पई सेठी गोटे जुहाय बोली गोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन थाए हमको परमिशन दरकार पड़े ठीक अछि तांको सिटीजन्स को भी परमिशन दरकार पड़े मकाउ को आसे इट्स अ परमिशन जस्ट ठीक अछि तेंति बहुत देश रे गोटे स्टेट रु आ गोटे स्टेट को जीवा पई भी आपन परमिशन दरकार पड़ी फॉर एग्जांपल कैटालोनिया इन स्पेन ओके सेठू आपण अलगा जगह को जिबे आपण गोटे इंटरनल परमिशन दरकार पड़ी इंडिया रे सेटा दरकार नहीं ताले लेट अस सी आर अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कोन ओके in the interest of general public or for the protection of interest of any scheduled tribes toda mu कहली नॉर्थ ईस्ट रे ए जिंसटा में सेटा आईएलपी इनर लाइन परमिट ता रखाई थे तापरे इको असंतु टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया रिसाइड एंड सेटल रिसाइड कोन टेम्पररी स्टे मोर चाकरी मोर ट्रांसफर हो जाय जम्मू कश्मीर मु जाय कि रहिबे एबे सेठी 6 मास कि 2 वर्ष कि 6 वर्ष किंतु मु सेठी माने परमानेंटली रहिबिनी मोर फुनी ट्रांसफर हो मु पळे आसी तो सेटा हला रेसिडेंस राइट टू रिसाइड सेठी हो परमिशन न पड़ियोनी तुम आछो टू ओडिसा रु तुमरो परमिशन नियो आगुरु लैंड किनी हो नथला एबे आपण लैंड भी किन परिबे जम्मू कश्मीर रे ठीक अछि तो इफ यू हैव दैट मनी एंड यू आर ब्रेव आउ जाकी समरटा सेठी आपण घर किनी की घर बने की सेठी रहिबे दैट यू कैन डू ओके so residence तापरे settle to settle in any part of India दरंत आपण इच्छा ला नाही मु जम्मू कश्मीर कश्मीर वैली रे ही जाकी सेटल करी परिबे किछ असुविधा नहीं है आर्टिकल 370 रो ओके एबोलिशन परे ओके से जिंसटा अछि एबे यू कैन बाय लैंड एनीवेयर इन इंडिया आगुरु 370 थिला रे टिके कश्मीर रे इशू थिला बट एबे सेटा भी नहीं सेटलमेंट माने पूरा जाकी आपण बसिबे सेठी पूरा माने यू विल परमानेंटली स्टे देयर ओके एमती कहि होबनी कि ओडिसा रु आछन एठी किनी परिबेन जमी जोडी भी इच्छा जमी किनी के रहि परिबे ओके सेटल आपण कर परिबे अपार्टमेंट किनी के रहि परिबे तो दीटा जाक जिंस टू द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया ओके तो तारो रेस्ट्रिक्शन कोन ई रे देखंतु सेटा डी आउ ई सेम जिंस ओके दैट इज interest of general public or for protection of the interest of any scheduled tribe तणु किछि जगह रे किनि न परंत जदि सेठी ट्राइबल पॉपुलेशन ओके से ताकू रिस्क रहिबो तापरे लास्ट आसिला आपनकर 6th राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस तेथरे कोन हबो आपण कोनोसी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर परिबे गवर्नमेंट कहबेन आपण चार्टर्ड अकाउंटेंसी करचंती अच्छा ताहले आपण सीए ही होबा पई पड़ियो जेंती आगुरु यूएसएसआर रे थिला काहे कि एमती थिला काहे ना से माने फंडिंग करथिले आपण गवर्नमेंट रो पैसा रे डॉक्टर हेले तापरे कहबे कि नहीं डॉक्टर हेला पर मु सिविल सर्विस देबी ओके दे विल नॉट अलाउ दैट एबे तो टिके फ्रीडम अछि रशिया रे यूएसएसआर रे अलाउ नटला आपण डॉक्टर ही जनी माने हॉस्पिटल रे सर्व करी ओके सो कीप दैट इन माइंड ओके सो एनी प्रोफेशन तो आपण चार्टर्ड अकाउंटेंट अछंती आपण कहबे नहीं मु फोटोग्राफर हे छी किछि असुविधा नहीं गवर्नमेंट से किछि आपण मना कर परिबे टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कोन आपण पढिचंती जा भी आपण सेटा निजे करि परिबे ओके व्हाटएवर प्रोफेशन यू वांट राइट सो तारो भी जदी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपण देखिबे nothing in the said clause shall affect the operation of any existing law in as so far relate to or prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on occupation trade or business जेमति कि आपण लॉ प्रैक्टिस करले 3 वर्ष एबे आपण बीए सोशियोलॉजी करी कि आपण कहबे मु लॉ प्रैक्टिस करी मते अलाउ कराउ सेटा हे परियो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन
सेटा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रे आसीबो आउ कोन carrying on by the state or by corporation owned or controlled by state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial of citizens or otherwise. ता माने स्टेट तार डिसाइड कर दे परिबो कि एई बिजनेस रे केवल गवर्नमेंट रहिबो लाइक टू रेगुलेट एंड टू एडमिनिस्टर न्यूक्लियर पावर इन इंडिया तो अब न्यूक्लियर पावर अथॉरिटी कोटे अछि ओके न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइट सो से हिसाब रे सेटा रहिबो सेटा एबे कहि होबनी कि जीएनएससी आसी सेटा करू ठीक अछि तेनु स्टेट सेही टाइप रो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस करि पारिबो okay so this is your article 19 right just a माइक समस्त टिके ऑफ पोजीशन रे रखंतु म्यूट करी कि रखंतु नले सेतरे इंटरफेरेंस होची जेतेबेले आपन किछि पचारिबार थिबो माइक का आपन अनम्यूट करी कि पचारि परिबे ठीक अछि सो नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल 19 तापरे आर्टिकल 20 रु आमे काली मॉर्निंग क्लास से ताको देखिबा please come to the questions. Which of the following best explains the nature of freedoms under Article 19? Okay, clause 1. They are absolute rights without any restriction. Bhul, reasonable restriction achi. They are available to all persons, including non-citizens. They are subject to reasonable restrictions specified in clause 2 to 6. This is correct. Okay, they apply only during emergency. That is not true. So, C will be the answer. Question 2. Which of the following is not a ground for restricting freedom of speech under Article 19(2)? Public order, friendly relation with foreign states, administrative convenience or defamation. Okay, so administrative convenience 19(2) by no. देखि दियंतु कोन एटा 19(2) जदि मने नाही ताले आपण एतरु देख परिबे ओके right कौन देला sovereignty integrity of India, security of state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in contempt of court, defamation or incitement to offense. तेणु सेठी administrative ये से जिनसडा नाही okay administrative convenience option रे नाही question 3 के असंदु in Ramesh Thapar versus State of Madras Supreme Court held what? So public order is not a ground under Article 19(2) originally, that is correct. Taku pore pasaichi. Okay. Question 4 question to which of the following correctly explains freedom of assembly under Article 19(1)(b)? So mujhe iska answer ta koi dauchi. It includes peaceful assembly without arms. Okay, assembling peaceably without arms. Question 5, very famous case in Shriya Singhal versus Union of India. The Supreme Court held that vague restrictions on speech are unconstitutional. Okay. Article 66A taku invalid karala, right? Question 6, a law imposes total ban on movement of citizens in a state without any justification. Which is correct? It is valid as state has police powers. It is invalid as it violates Article 19(1)(d). Okay, apanakar freedom achi, freedom of movement, internal movement. Valid if temporary or valid if passed by Parliament. So B will be the answer. Invalid avoid. Question 19. Which of the following is correct regarding Article 19(1)(g)? Right to trade is absolute. No. State cannot regulate profession. State can regulate. State can give minimum educational qualifications, those things can be done by the state. State can impose reasonable restrictions in public interest. Only state can regulate trade. So C will be the answer. State can impose reasonable restrictions in public interest. Question 8 question though. In state of Gujarat versus Mirzapur, Moti Qureshi Kasab, restriction on trade was upheld because trade rights are absolute. No, they are not absolute. Restrictions serve larger public interest. The public interest exception achi, okay.
गोटे जगह फॉर एग्जांपल हमरो कोविड बेले गोटे जगह कोविड स्प्रेड हेछि सेउठु जिंस गुडा आछि कंटामिनेटेड थिबो गवर्नमेंट ट्रेड बंद कर दबो से जगह तो सेटा वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19 ओ कहीं ना पब्लिक गुड पे करा हला सेटा पब्लिक वेलफेयर पे ओके सो बी विल बी द आंसर क्वेश्चन 9 which of the following freedoms was removed from article 19 we have discussed that right to property okay so C will be the answer last question a law imposes licensing requirement for carrying on a profession which is correct so C will be correct valid if imposes reasonable restriction in public interest okay so it is article 19 any doubts you have in article 19 काली हमें 20 रु तापर स्टार्ट करिबा ओके आर्टिकल 19 बहुत इंपोर्टेंट सेते मु बैर एक्ट रु कहबे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पूरा 6टा जकर मन रखियार अछि ता ऊपर क्वेश्चन पडिवार बहुत संभावना अछि ओके सो एनी डाउट्स यू हैड इन दिस or overall in today's class then you can ask me I'll give you 5 minutes now any doubts you can ask me okay else tomorrow morning 8 o'clock we will meet आउ आमे 20 रु स्टार्ट करिबा ठीक अछि जेतेटा काली दिनोटा भी जदी लाग गला किछ प्रॉब्लम नै काहे ना तापरे बहुत अल्प अल्प अछि तापरे कोन अछि ना बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशियरी बेसिक्स ऑफ पार्लियामेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट local self governance and some important constitutional bodies ठीक अछि बहुत जल्दी जल्दी हे जिवो ओके बट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 मेनली रु आर्टिकल 32 एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा हमको भल रे पढियार अछि दीटा खंडे क्वेश्चन आ तार केस लॉस करके भी देखियार अछि ओके सो we'll stop here then and we'll meet tomorrow morning